Okay, this is the PPT. मैम All right. जी बताइए. मैम in yesterday's class you told that you did your MBA, so I'm curious to know from where you did that. Sorry, I did what? Ma'am, you told in yesterday's class that you did MBA, so I am curious to Okay. know from where you did. So I am a triple postgraduate. So I did MA in HRM from Annamalai University. Why I did MA in HRM? Purely because they were giving a lot of what do you call it, labor related, industrial relation related things in Annamalai University. So their course coverage on those parts are very, very good. Before that, I did my MBA from SIBM Pune. And then after some times, I realized I still need to learn something. So I went to IIM Ahmedabad to do 1 year MBA program. So that's the reason why I said yesterday, na, when you have the passion towards something, थोड़ा बहुत फिर learning के लिए ना मजा आता है when you start developing yourself for that. So somehow I fell in love with HR because my father was in HR. He was working in a company called BHEL and he led, human resource department for many years, almost 35 years. So because उस time पे वो लोग job नहीं ज़्यादा जल्दी change करते थे, it's a public sector job. So he worked there and I used to go to office with him sometimes. So वहाँ का atmosphere देखकर, obviously BHL जैसा atmosphere आपको private organizations में नहीं मिल सकता. But yes, still I fell in love with HR because of him, what he used to tell us. And he was happy at least one of us is taking care of what he loved as well. Right? So this is how, so passion start होता है जहाँ पर आपका, then you have to realize कि आपको उसको कैसे अपने करियर में बदलना है, because you should feel see अभी तो हम ले रहे हैं इंटरेस्ट करके कोई भी स्पेशलाइजेशन, राइट, मार्केटिंग चूज कर रहे हो, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, एचआर, बट यू नीड टू रियलाइज कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है. Tomorrow, what kind of problems you can really take care of when people will come to you? Will you get irritated when people will come and talk to you about different things? So वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं एचआर में अपना करियर बनाने के लिए, राइट, एंड ऑब्वियसली द नॉलेज पार्ट फॉर श्योर. Every morning when you get up, you should feel that you are going to do something that you are passionate about. Just love doing your job. So that is what the most important part. All right, so coming to the topic for today, what we are going to talk, because आज का topic तीन अलग अलग small categories में divide किया हुआ है हमने. So first part we will be talking about interviewing skills and techniques, right? And because it's kind of a lecture format, I will tell you the techniques and all that thing. Then we will come to your resumes individually. We will try and take care of one or two CVs in front of you, and the rest of the CVs you can try and create out of the tips जो भी हम शेयर करेंगे. फिर वो टिप्स को यूज करके आप अपने रिज्यूमे बना के मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, एंड देन आई विल चेक एंड सेंड इट अक्रॉस टू यू. व्हाट्सएप से बेटर होगा ईमेल कर देना, सो दैट आई विल चेक, आई लेट यू नो क्या चेंजेस करने हैं, देन वी कैन डू दैट. वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ लिंक्स व्हिच आर अवेलेबल. मैंने आई थिंक पिछले क्लास में भी भेजे थे, फॉर विल आई सर्च फॉर दैट लिंक. अगर आप उस लिंक पे जाओगे वहां पर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं ऑलरेडी रिज्यूमेस बनाने के लिए फॉर फ्रेशर्स. जस्ट पिक अप एनी ऑफ दैट फॉर्मेट, ऑटोमेटिकली चेंज करके वो आपकी डिटेल्स आपको दे देगा. सो दैट इज अ काइंड ऑफ लिंक दैट इज, इट्स बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू कैन डू दैट. इतना टाइम लगाने की उसमें जरूरत नहीं है. कीवर्ड्स जो ऑब्जेक्टिव लिखोगे, दिस इज वेयर यू नीड टू पुट योर टाइम इनटू, कि जो ऑब्जेक्टिव होगा आपके सीवी का, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. देन थर्ड पार्ट ऑफ आज का कॉल, आज का क्लास इज द LinkedIn. We will not spend too much of time on LinkedIn, but yes, we will do networking and LinkedIn, why it is important. And then preparing you for appraisals interview. So interview techniques, how to clear interviews right now after you will get to complete the course or after your graduation. Also, how you can clear appraisal interviews, how you can conduct appraisal interviews.
बिकॉज कल अगर आप एचआर बनते हो कहीं पर, यू माइट हैव टू टेक अप्रेजल इंटरव्यूज एज वेल. सो वो अभी हम इसी में कन्वर्ट कर कंप्लीट कर रहे हैं पीपीटी में. लेट मी नो इफ यू कैन सी द स्क्रीन. Yes, ma'am. रीडेबल? आई एम नॉट शेयरिंग इन द फॉर्मेट. कंप्लीट स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं मुझे रीड नहीं हो पाएगा. देयर इज सम डिफिकल्टी इन दिस वन. आई होप यू कैन रीड दिस, राइट? फॉन्ट रीडेबल है ना? Yes, ma'am, it's Yes, readable. ma'am. Perfect. All right. So now this class is about how and what to prepare when you're going for the interview. जब आप पहली बार जाते हैं कहीं पर किसी के साथ मिलने के लिए, किस तरीके से आप अपना जॉब इंटरव्यू क्लियर करते हैं. सो टू इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, कि आपको प्रिपेयर होना पड़ता है कि पैनल इंटरव्यू है या इंडिविजुअल इंटरव्यू होने वाला है. एंड दिस इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क फ्रॉम द रिक्रूटर, जो भी आपको कॉल करके बुला रहा है इंटरव्यू के लिए. यू कैन आस्क दिस थिंग कि किस तरीके का इंटरव्यू होने वाला है. क्या वो मुझे 3-4 लोग इकट्ठे मिलकर इंटरव्यू ले रहे हैं एक पैनल बनाकर, या इंडिविजुअल इंटरव्यू है. सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Now, what are the types of interview that can happen for any job? One is formal and informal interviews. Again, depending upon the company that you are going into, there can be two different formats. Formal is obviously very formal part of how you can prepare for the interview, in terms of your dressing sense should be right. You need to have your all the degrees, diplomas, whatever is there, all the documentation part should be with you. You are formally dressed in terms of pantsuits, skirt suits, yeah, sarees, salwar kameez, whatever works for the organization. And then the interview generally is taken into a format where they are very formal. It's very structured. They already have all the questions prepared. We will go through those questions also by the end of this PPT, so that you can understand generally क्या questions पूछे जा सकते हैं. Again, panel to panel, people to people, the questions can differ, but still कुछ ऐसे questions हैं जो बार बार repeat होकर आते ही हैं. Everybody generally tries and use those. Wordings change कर देते हैं वो लोग interview के time पे, but usually they try and take those things in interview. सेकेंड आता है आपका फिर sequential and panel interview. Like I said, so sequential interviews are basically where you are going to different people in sequence. So सबसे पहला आपका इंटरव्यू लिया मे बी HR एग्जीक्यूटिव ने. सेकेंड राउंड ऑफ आपका उन्होंने बोला कि चलिए क्योंकि आप HR में ही आ रहे हैं तो हमारे HR मैनेजर आपका इंटरव्यू ले लेंगे. देन थर्ड राउंड पैनल आ गए कि उसमें HR मैनेजर भी बैठे हैं, कोई और डिपार्टमेंट हेड भी आ गया है, एंड सम अदर पीपल दे माइट कैन कॉल, और वो तीनों मिलकर आपका इंटरव्यू ले सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल एंड पैनल. पैनल में इजी यह होता है कि सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं, सो इट इज इजी दैट यू आर रेफरिंग टू ऑल ऑफ देम एंड देन यू आर मीटिंग. नाउ पैनल इंटरव्यू को जो हम क्लियर कर रहे होते हैं या हम बात कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा आई कांटेक्ट कैसे बन रहा है एंड विद whom, बिकॉज आपके सामने 3 या 4 लोग बैठे हैं, किसके साथ आप अपना आई कांटेक्ट बनाओगे? How will you choose? So you need to rotate your eyes one from another. Very importantly. Especially जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तब ये नहीं करना है कि सिर्फ उन्हीं को देखकर आंसर देना है. You have to still rotate your eyes and look into their eyes and talk to them. और जनरली हमारा जो फंडामेंटल होता है कि हम आंखों में नहीं देखते हैं. बिकॉज इफ यू लुक इन टू पीपल्स आईज बहुत ज्यादा, तो कई बार ऐसे लगता है कि आप घूर रहे हो उनको. तो द बेस्ट पार्ट इज टू लुक हियर. तो लोगों को ये लगता है कि आप उनकी आंखों में देख रहे हैं. उससे आप नर्वस भी नहीं होते हैं, बिकॉज समटाइम्स इफ यू आर लुकिंग एट समबडी सीनियर टू अस एंड देयर आईज, तो हमें नर्वसनेस हो जाती है. उनके एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं या वो किस तरीके से सामने इमोशंस बना रहे हैं फेस में. सो बेटर इज टू लुक हियर सो दैट यू आर नॉट डायरेक्टली लुकिंग इनटू द आई, बट दे कैन सी दैट यू आर लुकिंग इनटू देयर आईज. पैनल इंटरव्यू में और भी चीजें आती हैं कि दे ट्राई एंड कंफ्यूज यू फॉर डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. समटाइम्स पहले से ही स्ट्रक्चर किया होता है उन्होंने कि वो आपका स्ट्रेस लेवल चेक करेंगे कि कितना आप स्ट्रेस ले सकते हो. सो मे बी वन पैनलिस्ट विल से समथिंग एल्स, सेकेंड वन विल से समथिंग एंड थर्ड वन विल से टोटली डिफरेंट थिंग्स. इट दिस इज टू जस्ट टू कंफ्यूज यू. सो हाउ द राइट वे ऑफ आंसरिंग इज स्टिल द सेम. जो आपको आता है यू हैव टू स्टिल आंसर इन द सेम मैनर. कन्विक्शन देखते हैं वो आपकी कि आप कितने ज्यादा कन्विंस्ड हो वट एवर यू आर सेइंग, आर यू रियली श्योर अबाउट दैट और नॉट.
फॉर एग्जाम्पल, एक आपसे इंटरव्यू ने पैनल में पूछा कि अ, आपकी फेवरेट बुक क्या है, राइट? अगर आपने लिखा है कि रीडिंग इज माय हॉबी इन माय रिज्यूमे, तो उन्होंने पूछा कौन सी बुक्स पढ़ते हो, विच इज योर फेवरेट बुक। नाउ आपने कोई भी नाम ले दिया, मे बी सामने पैनल ने आपको बोला, किसी एक व्यक्ति ने बोला कि मैंने पढ़ी है, मुझे तो बहुत पसंद नहीं आई ये बुक। सेकंड वाले ने बोला कि आई डोंट थिंक कि आपने ये बुक पढ़ी होगी। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। द थर्ड वन सेड कि नहीं, बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो बहुत पसंद आई। सो नाउ दे जस्ट वांट टू सी योर रिएक्शन कि आप किसकी तरफ हैवी हो रहे हो। So the right way of answering this question is, because you have read the book, whatever you liked or disliked about the book, just talk about that particular thing. Simply. If you like it, just be prepared with one or two questions. Why, one or two tips that why did you like it? If you did not like the book, you can just share that review with them. One or two things. Now you must be thinking कि क्यों आपसे किताब के बारे में पूछेंगे? Why not about the HR? They just want to know whatever you have written in your resume. Are you prepared about everything that is there in the CV? सी फर्स्ट इंटरव्यू में क्या होता है, हमारे पास कोई रेफरल पॉइंट नहीं होता कि, बिकॉज फॉर मी प्रेरणा इज टोटली न्यू, दीप्ति इज न्यू, है ना, यंचिका इज न्यू, आई हैव नेवर मेट दीज पीपल बिफोर। आई एम मीटिंग दिस कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। सो आई डोंट नो व्हाट प्रेरणा's बैकग्राउंड इज। जितना सीवी में लिखा है रिज्यूमे में, आई कैन ओनली लुक इनटू दैट। और अगर रिक्रूटर मेरा थोड़ा समझदार है या उन्होंने कुछ वो कह दिया, तो उन्होंने आपके शायद फेसबुक भी चेक किया हो, इंस्टाग्राम भी चेक किया हो, जस्ट टू सी हाउ योर सोशल इम्पैक्ट ऑफ योर लाइफ इज। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता है। सो वट एवर इज देयर इन द रिज्यूमे, वी विल ट्राई एंड गेट इन टू द डिटेल्स अबाउट दैट। सो हमें उसमें सब कुछ पता करना है। अगर आपने अपनी ट्रैवलिंग लिखी है हॉबी, सो ट्रैवलिंग में आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद है। विच प्लेसेस यू हैव ट्रैवल, ना, क्यों गए हो आप ट्रैवल। और अगर ये सिर्फ एक इंटरेस्ट है जो आप सोचते हो कि आप करोगे वंस यू आर देयर, तो प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, बट इट कैन नॉट बी अ हॉबी देन इन दैट केस। So you need to clearly understand the difference between what can be the hobby and what can be the interest, right? Hobbies क्या होती है जनरली हमारी? Ma'am, painting, dancing, singing, cooking, the day-to-day activity we perform in our life. Yeah, something that you enjoy doing on a very frequent basis. कभी भी डेली करना चाहते हो, डेली करते हो, वीकली करना चाहते हो, राइट? सो जैसे गार्डनिंग कैन बी अ हॉबी, बिकॉज आपको प्लांट्स अच्छे लगते हैं, आप टाइम निकाल सकते हो, हर तीसरे चौथे दिन उनको पानी देना है, खाद देना है, वट एवर, देन यू कैन डू ऑल दैट थिंग। सिमिलरली आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, लाइक यू सेड, यू नो, इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ डूइंग दैट। इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं हमारे? अच्छा, एक Reading डायरेक्ट books, क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ, रीडिंग बुक्स इज एन इंटरेस्ट, गुड। लिसनिंग टू म्यूजिक इज अ हॉबी और इंटरेस्ट? Ma'am, it's interest. an interest. It's an interest, right? So that is very important to understand that reading books, listening to music, watching movies cannot be a hobby, right? Traveling cannot be a hobby. These are interests because you really love. Traveling can become your hobby when you're doing it often, very often. You are going maybe once or two trips you are doing in a month, or maybe 2 महीने में एक बार आप घूमने जा रहे हो. So जस्ट इंश्योर दैट व्हाट यू आर राइटिंग, बिकॉज हम एटलीस्ट मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछती हूँ, जो भी आपका सीवी में लिखा है, आई विल ट्राई एंड ग्रिल यू फॉर दैट। एंड मोस्ट एचआर मैनेजर्स आर ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी हमारे सामने लिखा है, विल ट्राई एंड गेट टू नो यू मोर अबाउट यू फ्रॉम दैट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्रिलिंग, बट हाँ, स्ट्रेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू सी कि आप कितना अपनी जॉब में स्ट्रेस मैनेज कर पाओगे। अगर आपने इंटरव्यू में स्ट्रेस मैनेज नहीं किया, तो इमेजिन कि जॉब में कैसे कर पाओगे लोग, राइट? थर्ड आता है आपका ग्रुप इंटरव्यू। ना, हाउ इज पैनल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू डिफरेंट? Ma'am, in panel, there are more number of people, and uh, in a group, the candidates are in more number of people. परफेक्ट, वेरी नाइस। सो हियर पैनल इंटरव्यू में, पैनल इज, आई मीन जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूअर्स आर मोर। ग्रुप इंटरव्यू मीन्स यू आर कॉलिंग ऑल द पीपल टुगेदर। सो जनरली फ्रेशर्स के साथ क्या किया जाता है जब दे कम फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज वी आर हायरिंग इन बल्क यूजुअली, दैट्स व्हाई दे कॉल फॉर फ्रेशर, जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं,
सो कैंपस में भी जब वो आते हैं आपके इंस्टीट्यूट में या कॉलेजेस में, द फर्स्ट राउंड दे डू इज दे कॉल एवरीबडी इन वन रूम एंड दे टॉक टू यू अबाउट द कंपनी, दे टेल यू अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड देयर ओनली दे आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स योर इंटरेस्ट, क्या करना चाहते हो लाइफ में, व्हाट्स योर गोल, व्हाई हैव यू चूजन दिस स्पेशलाइजेशन, सो वेरी जेनरिक क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन द ग्रुप इंटरव्यू देयर, जिसका आंसर आप एक दूसरे के सामने दे सकते हो इजीली, कोई ऐसी बात उस पर नहीं होती है, राइट? सो दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू, उससे क्या हेल्प हो जाती है that you can really see how people are giving you answers in front of people, a room full of people, right? तो वो थोड़ा सा आसान उनके लिए जज करना हो जाता है, प्लस बिकॉज a lot of things are very repetitive so they don't want to call you personally and then do that. So जब भी बल्क हम हायरिंग कर रहे होते हैं, so group interviews comes to be a very easy thing. ग्रुप इंटरव्यू के साथ ऑल्सो ग्रुप डिस्कशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग. जैसे आप देखोगे जब हम किसी एमबीए इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रिपेयर करते थे, जब हम लोग मैथ कैट के लिए प्रिपेयर किया था, सो कैट के टाइम पर भी परसेंटाइल फॉर रिटन एग्जाम इज समथिंग डिफरेंट. वो क्लियर करने के बाद मेजर जो डिफिकल्टी वाला थिंग था, दैट वाज द इंटरव्यू दैट हैज टू बी क्लियर्ड both for symbiosis and IM. So you need to be prepared. You don't know what kind of questions are they going to do, what kind of group discussions that they are going to give you the topic on, and then how are they going to pick you up. Because group discussion जब होता है, have you ever done group discussions? करा है कभी? Yes, ma'am, while doing our studies, we did that. तो ग्रुप डिस्कशंस वैसे वाला नहीं कि किसी टॉपिक को लेकर बात कर दिया. ग्रुप डिस्कशन फॉर इंटरव्यू, फॉर क्लियरिंग समथिंग, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. नेवर डन दैट राइट नाउ. अभी क्योंकि अभी आप लोग निकल रहे हो ना ग्रेजुएशन से, तो अभी टाइम आएगा वो, वंस यू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So in group discussion, what happens when people are, they generally create a group of 6 to 8 people, right? And then they give you one topic to discuss. So for example, whatever is the latest general knowledge का topic going hot. So जैसे अभी elections आने वाले हैं, so elections के बारे में हो सकता है. What do you think of the general election that is going to happen in 2024? Which party do you think can really take care of India very well? So just to know what's your perspective. They don't want to know how much knowledgeable you are. I mean, वो तो होता ही है कि आपको पता कितना है जनरल नॉलेज के बारे में, but they just want to know how can you can take a lead during the group discussion. Whether you are getting very aggressive or whether you are very soft and polite. Are you getting too nervous कि बात ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी आपको बोला नहीं जा रहा है? How are you working in a team, in a group when such situations comes in? So group interviews का, group discussions का purely यही मेथड होता है, right? So we will try, जब आप लोग HR से शिफ्ट होगे HRM में, then we will try and take you through that group discussion thing. और maybe if possible, अगर आज टाइम बचता है लास्ट में 10-15 मिनट, then maybe one topic let's do, so that you will get an idea कि group discussions कैसे किए जाते हैं, right? क्या टिप्स होती हैं उनके लिए. Then situational interview. Now this part of situational interview is most favorite of mine. Why? Because आप इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हो जनरली, जैसे आप सबके साथ करते हो ना, क्या नाम है आपका, व्हाट्स योर हॉबी, क्यों आपने एचआर स्पेशलाइजेशन चूज किया, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट रेलेवेंट हियर. सिचुएशनल इंटरव्यूज आर मोर अबाउट टॉकिंग टू देम अबाउट द रियल लाइफ सिचुएशंस. जैसे हम केस स्टडीज की बात करते हैं, तो स्मॉलर केस स्टडीज यू ऑलरेडी नो कि आपने कितने एचआर की प्रॉब्लम्स हैंडल किए हैं. So you need to create those problems into a situation for the interviewee, और उनको बता रहे हो कि सपोज ये ऐसी सिचुएशन हो गई तो आप क्या करोगे, नहीं? जैसे हम कल बात कर रहे थे कि आपके पास कोई वुमेन आ गई अपने आपके ऑफिस के अंदर एंड शील से कि आपके ऑफिस का रूल होना चाहिए, गवर्नमेंट कहती है कि सैनिटरी पैड्स के लिए वेंडिंग मशीन होनी चाहिए, आपने क्यों नहीं लगवाया वो अपने ऑफिस में. सो व्हाट इज द काइंड ऑफ आंसर आर यू गोइंग टू गिव? Right? So these are the kind of situational interviews that we generally ask, directly coming from the day-to-day problems that you are going to handle as an HR in the company. Then आता है phone or video call interview, again because of the internet and because of the COVID period. Thanks to that, and even before that, people when we used to hire people from outside foreign countries or for different kind of clients. So phone interview or video call interviews are a very good thing.
Now again we take phone interviews or video interviews very lightly. हमें लगता है कि वो हमें सामने तो है नहीं, बॉडी लैंग्वेज क्या देखेंगे, किस तरीके से वो करेंगे. But the smarter way of doing this is basically is letting the person, I mean, let them feel that you are still prepared and interested in the job. And how you can do that is again same thing. जो आप formal और informal interview के लिए prepare करोगे, face to face, all those things needs to be there. Your dressing sense has to be completely proper. Your hair should be tied in a very neat and clean way. There should not be too many dangling interview, क्योंकि dangling earrings जब होते हैं, जब हम interview ले रहे होते हैं, so interviewer का ध्यान, because इतना ही portion दिख रहा है आपका, till chest, not below that, so you can, बहुत ज्यादा उस पे ध्यान चला जाता है, you can't do that. You need to ensure that your camera and your network is really, really good during that time. There should not be any excuse unless there is a power breakup or something. But you need to ensure that wherever you are giving the interview for, the connectivity is very good. So prepare before all those things. Then वीडियो कॉल इंटरव्यू के अंदर और भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है. I mean, it gives you basically a very good platform that you can, in case some question is asked, you can always answer it by looking into something else. But don't try and make it so obvious कि सामने वाले को पता चल जाए कि आप कंप्यूटर में कुछ ढूंढ रहे हो. You can do that. There is no problem at all with that. But just ensure that this interviewer should not get to know about this thing. Because sometimes बहुत ज़्यादा लोग बहुत obvious हो जाते हैं कुछ ढूंढने के चक्कर में. They try and spend a lot of minutes into that. And it becomes very clumsy कि सामने वाला आपको देख रहा है और आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, आप कुछ टाइप करने लग रहे हो, आपके हाथ हिल रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं. So all those things has to be really important. Then background noise. So background noise you have to ensure. I know घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, अलग अलग होते हैं, especially when you have pets, like yesterday it happened with me. So कुछ भरोसा नहीं होता है, no matter how good they are trained, if something is happening, so they will obviously show that they are there. You don't have to feel sorry about it, but you can always give a right excuse for that. You can always just say that I regret the inconvenience caused. Right? Never feel sorry about situations जो आप कभी खराब, मतलब हमेशा हर एक की लाइफ में हो सकती है. It's not just about you. इंटरव्यू के घर में भी कुछ हो सकता है, वहां से भी बर्तनों की आवाज आ सकती है, वहां पर भी कुकर की सीटी बज सकती है. So because see, in COVID times, this is what we learned. कि all these things should not matter when it comes to the formal discussions or meetings or when we are handling the office work. This is part of life as much as when we are doing the calls and meetings with the clients, right? So don't make be sorry about this, but yes, regret that the inconvenience caused. Simple like that. Next इसकी slide है अब आपकी, how can we conduct interviews. ये हो गया, इसकी का पार्ट था ये. This is just to ensure, tell you, मतलब we'll not go into the details of this because otherwise it will take too much of time. कि कितने टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं, but these are not all related to job interview, right? They can be for various times of time when you are going into the, see, because once sometimes it would be possible that you will be on the other side of the table as well. अभी तो आप इंटरव्यू देने की बात कर रहे हो. There would be a time because if you are especially going into HR or even if you're going into any other specialization, tomorrow you will be at such stage sometimes where you will also conduct interviews and hire people for your organization. Or not just hire, there can be a different kind of interviews that you might have to take in the company. So हम लोग HR में generally क्या क्या interviews लेते हैं over a period of time during the job. First is your personal interview, which is to hire when we are hiring you in a company. Then general interview. General interview is about knowing the basics about the persons. कि क्या आपका काम है, कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है, what kind of communication skills you prefer, and all those things, just the basic details about the person which is mentioned in your resume as well. Then informal interview talks about different informal things. There is no format or structured way of conducting the interview. Depending upon the situation that is arising in the interview, किसी भी तरीके का question आपसे पूछा जा सकता है, just to know about that. Right?
बट इनफॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि हम आर नॉट ड्रेस्ड प्रॉपरली, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. इनफॉर्मल का जस्ट मीनिंग सिर्फ इतना ही है दैट इंटरव्यू आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस. दे कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर in a very informal manner. Then stress interviews are conducted in companies when we see that there is somebody who is going through a lot of personal problems. या कोई बहुत ज्यादा एब्सेंट हो गया है, बहुत दिनों से ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, या इन्फॉर्मेशन अगर आई है तो यू डोंट नो द इंटायर डिटेल्स कि क्यों ये एम्प्लॉय कंपनी में नहीं आ रहा है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद देम. So in order to know all those things, you conduct a stress interview for the employee. From the perspective, again, इसके जो questionnaire होता है, it's very structured. You need to prepare it in advance that what are you going to ask, so that the other person may not feel discomfort in sharing their personal details with you, even no matter what, if you are in HR. पर इतना comfortable आप उसे कर दो that सामने वाला आपको अपने आप अपनी तकलीफें या whatever problems they have, they can share it with you. Right? Then आता है disciplinary interview. Now disciplinary interview comes when there is a problem that you have encountered in an organization. आपने ऐसा कुछ किया है वहां पर जो कि आपको डिसिप्लिनरी के लिए वहां पर बुला लिया गया है. So as a part of the disciplinary counseling that we do, we conduct disciplinary interviews for people as well to know more about the situation जो भी जिसकी वजह से भी वो हमारे सामने आए. राइट. मेजोरिटी ऑफ द टाइम एचआर के पास ये चीजें इसलिए आती है बिकॉज पैनल के लिए डिसिप्लिनरी जो हमने बनाई होती है पॉलिसी, वो एक्ट हमने पढ़ा होता है अपनी क्लासरूम्स में. वो एक्ट पढ़ने के बाद आपने अपनी कंपनी का डिसिप्लिनरी पॉलिसी बनाई होती है. सो यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस किस तरीके से डिसिप्लिनरी थिंग्स हैंडल की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. हेंस दिस डिसिप्लिनरी इंटरव्यू. Again, for disciplinary interview, very, very formal. It has to be structured in a very right manner. You cannot really go haywire. इधर उधर कहीं नहीं जा सकते. पर्सनल कमेंट्स नहीं कर सकते आप किसी की पर्सनालिटी के ऊपर, चाहे आप उनको कितना भी जानते हैं ऑफिस के अंदर, आपको उनकी कितने भी नेगेटिव चीजें पता हो, बट स्टिल यू कैन नॉट कमेंट ऑन ऑल दोस थिंग्स विच इज अनरिलेटेड विद द डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम दैट हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू. सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं बिकॉज बायसेस हमारे लाइफ में ऐसे एंटर हो चुके हैं ना हमारे ब्रेन में, that it generally doesn't go away from us that easily. So you need to ensure कि उन biases को कैसे हमें handle करना है on a day-to-day basis, and then in interviews also how we can do that. Then आता है counseling interview. Now a lot of people in the organization think कि HR के पास बहुत सारे solutions होते हैं. They think that you are master of psychology somewhere. So any problem that comes in the organization, even the head of the departments और जो seniors होते हैं वो भी उनको यही कहते हैं कि HR से जाके एक बार बात कर लो, they'll understand your problem. So people will come to you at various stages for counseling, very importantly. अब वो इसीलिए आते हैं बिकॉज HR का एक बहुत बड़ा रोल है जो कंपनी में हम प्ले करते हैं, दैट इज मीडिएशन. मीडिएशन क्या होती है? दैट वी प्ले रोल बिटवीन दो पार्टीज के अंदर. कंफ्लिक्ट हो गया, प्रॉब्लम आ गई, वो आपने मीडिएशन करा दिया सामने बिठा के दोनों को. टीम मेंबर्स के बीच में हो जाता है, प्रोजेक्ट के बीच में हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है. सो उसी से ही काउंसलिंग इंटरव्यू आता है. देन यू नीड टू काउंसिल द पर्सन. सेफ अगर किसी को कंफ्यूजन है कि मेरी प्रमोशन होने वाली है तो मुझे वो रोल मिल रहा है, हाउ एम आई गोइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ, दैट्स व्हेन यू कंडक्ट काउंसलिंग इंटरव्यू फॉर देम, प्रॉपरली काउंसलिंग देम कि इसके क्या फायदे होने वाले हैं. सो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. नुकसान तो खैर नहीं होता है करियर डेवलपमेंट का, बट स्टिल जस्ट टू लेट देम नो their interest in case you are certified or you have taken a separate certification in some psychometric testing. So then you can utilize psychometric testing here in counseling interviews. Properly career coaching के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं within the company, giving them professional approach कि किस तरीके से आप अपना career choose कर सकते हैं. Because जो freshers आते हैं especially organization में, या even after 5-7 years experience के बाद, some people get confused कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है. राइट. स्पेशली आई टेल यू व्हाट यूज्ड टू हैपन. तमाशा एक पिक्चर आई थी, मूवी, यू मस्ट हैव सीन. तमाशा के बाद कॉर्पोरेट्स के अंदर बहुत लोगों को भूत चढ़ा था कि वी हैव टू चेंज द करियर, हमें भी कुछ और करना है बिकॉज रणबीर कपूर वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. एंड ट्रस्ट मी, मतलब दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग आई एम टेलिंग यू. सो मेनी एम्प्लॉयज वांटेड टू डू समथिंग एल्स.
काम से दिमाग ही हट रहा था उनका कि हमें ये नहीं करना. During that time, I remember the highest number of counseling interview we conducted during that time for organization. उनको ये बताने के लिए कि it's good to go for a second career or you need to have something that you're passionate about. But that second thing will take time to develop. आपने एक चीज में आप हो सपोज राइट, आपने 5 साल एचआर में लगा लिया, आप एक जॉब में हो, पैसा भी अच्छा अर्न कर रहे हो, 5 साल में आ गए हो, तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी अर्निंग समथिंग गुड, यू मस्ट बी हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली, जो आप सपोर्ट कर रहे हो अपनी फैमिली को या अपने घर को. उसके अलावा आपका, चलो मान लेते हैं इंटरेस्ट है कि आपको पेंटर बनना है. यू फाइन, बट यू स्टार्ट, हाउ विल यू स्टार्ट बिकमिंग अ पेंटर? पहले ही दिन आपके पास पैसा नहीं आने वाला है पेंटर बनने से. इट हैज टू बी अ प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो, जो शायद 5 साल पहले स्टार्ट किया होता, आपको आज उसके गुड रिटर्न्स आ रहे होते. एंड पेंटिंग एज एन आर्ट can be something that can be done with the primary career that you have, right? So ये सब चीजें इस तरीके से आपको अपना सी, जितना आप क्लियरिटी रखोगे अपने सोच विचार में, इन योर थॉट प्रोसेस, हाउ गुड यू आर इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस सिचुएशन यू नीड टू अंडरगो. अब उस टाइम पे हम लोग भी प्रिपेयर नहीं थे जब मूवी आई थी. एंड द फर्स्ट केस विद मी वाज कि हमारे कंपनी के सीनियर डायरेक्टर, ही सेड आई वांट टू लीव माय जॉब एंड आई वांट टू स्टार्ट स्टैंड अप कॉमेडियन, being a stand-up comedian. Imagine a very senior director asking you कि मुझे बनना है, and I have left. And you can't conduct a counseling interview with him. So I took him out for drinks. We sat for dinner and I told him कि, this is how the life is going to be. You have been, imagine, senior director of a very large company. I can't name the company here. And he was earning 75 lakhs का package per annum. तो यू कैन अंडरस्टैंड 75 लाख की सैलरी छोड़कर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बनेगा, पहले दिन उसके पैसे नहीं आते हैं, इनफैक्ट आज भी नहीं आ रहे उनके पास इतने पैसे. बट ही लेफ्ट इवेंचुअली, नॉट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ही टुक इट स्लोली, ही स्टार्टेड बुकिंग, ही स्टार्टेड ट्राइंग सोशल मीडिया फॉर हिज दिस थिंग्स. आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग 2-3 लोग थे कंपनी के अंदर, उनके सीनियर्स भी जो हमारे सीईओ थे वो भी, ही ऑल्सो हेल्प. And we tried convinced him not to leave the job full time and then take up this thing side by side slowly. And he did that for 2 years at least. He tried, and then he said, "Ki now it's done. I can't really do that." But he was the first one who was very impressed with Tamasha, and he came and said, "Ki mujhe karna hai." And after that, to fir, because one of the senior directors doing it, people get to know कि हमें भी करना है, हम भी try करते हैं. Right? Some people got really successful also in their second careers, much better than what they were doing actually in the organization. But again, that depends. Like I started today's classes with कि how passionate you are is very important to know, right? और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पैशन आज आपको पता चल जाएगा. कभी ऐसा होगा कि 10 साल बाद आपको पता चल रहा है कि आपका इंटरेस्ट और पैशन क्या है. So you need to prepare about that. How can you be prepared about that? Financially strong होकर. आपका financial structure और जितना भी सैलरी आप अर्न कर रहे हो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो. Because as a new joinee in an organization, generally people tend to get too overboard with the money. अभी तक अपना पैसा नहीं देखा होता है, मॉम डैड से ले रहे होते हैं. So first time when you start earning, you get too independent. कि मेरा पैसा आ रहा है, आई एम अर्निंग, सो आई एम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स. दिस इज द फीलिंग दैट कम्स, एंड ट्रस्ट में सबके दिमाग में आती है ये वाली फीलिंग. और थोड़ा सा दिमाग उस टाइम काम नहीं करता है, देन यू डोंट रियलाइज कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. यू स्टार्ट स्पेंडिंग दैट मनी अननेसेसरीली, क्योंकि कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ख्वाहिशें होती है, नो, आई हैव टू गेट द ब्रांड, मुझे ये ब्रांड के कपड़े ही खरीदने हैं, ये वाले शूज ही लेने हैं, ये सब चीजें ही करनी है, कार भी अभी ले लेनी है, आई डोंट वांट टू वेट. सो दीज आर द थिंग्स, बिकॉज बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, मे बी आपके ड्रीम्स थे जो पूरे हो रहे हैं, एंड देर इज नो प्रॉब्लम इन कम, डूइंग योर ड्रीम्स, लिविंग योर ड्रीम्स इज वेल. बट क्या होता है उस टाइम पे हम इतना ज्यादा कैरीड अवे हो जाते हैं इसके अंदर, दैट वी डोंट रियलाइज कि ये मनी जो है आगे आने वाले टाइम में काम आने वाली है, right? If it is invested properly. So 20% of whatever you're earning at any time, just try and save that money and invest in something somewhere, right? And these are the kind of counseling also you need to conduct for the organization as well. जब आप कंपनी में होते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट जनरली बहुत अच्छा नहीं होते हैं कम्युनिकेशन में. So they generally cannot communicate and teach people how to do financial investments properly.
सो वो आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जरा भी इंटरेस्ट है, सो दे ट्राई यूज यू एज वन ऑफ द कम्युनिकेटर बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड यू, दैट इन्वेस्टमेंट का टाइम आ रहा है कंपनी के अंदर, आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने हैं, बिकॉज जब आप सैलरीज ले रहे होते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी देने होते हैं टैक्स सेव करने के लिए. How can you save tax? How can you invest your money better? What can you do with the money so that it increases over a period of time? कि आपको नुकसान भी नहीं हो रहा है और आप उसको सेव भी कर रहे हैं. So these are the very important things for the counseling interview that you need to know. मतलब these are very common topics that will come for you. फिर आता है क्लोज इंटरव्यू. क्लोज इंटरव्यूज आर बेसिकली दोज इंटरव्यू जहां बहुत लिमिटेड आपको पता है कि इसी के बारे में बात करनी है, एंड देन दीज आर नॉट ओपन एंडेड कहीं से भी. यस नो वाले आंसर्स हैं, या बहुत क्रिस्प वाले इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पर आपको एक ही टॉपिक पे बात करनी है एंड यू आर वेरी श्योर कि इतना ही बात करके वी हैव टू क्लोज द इंटरव्यू. जैसे एग्जिट इंटरव्यू क्लोज इंटरव्यू होता है. Not too many questions. You know what you need to ask. Once a person has made their mind, they are leaving the organization, then you conduct the exit interview with that person. Exit interview के again questions are very structured. Generally, most companies में हम क्या करते हैं, we create a format already. क्योंकि कई बार होता है कि आप इन पर्सन इंटरव्यू नहीं ले पाते तो आप क्वेश्चनर भेज देते हो, फिल दैट क्वेश्चनर एंड सेंड इट अक्रॉस टू यू, राइट. बिकॉज एग्जिट एक ऐसा टाइम है जब कंपनी आप छोड़ के जा रहे होते हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग ऑल द प्रॉब्लम्स. सो इट्स बेटर अगर आप क्वेश्चनर फॉर्म में भी दे रहे हैं, सो दे कैन जस्ट फिल इट एंड सेंड इट अक्रॉस टू यू. दे आर नॉट फेसिंग यू डायरेक्टली फॉर डूइंग दैट. स्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज आर लाइक कैसे बताएं स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू का एग्जाम्पल. Now these are very specific question answers kind of thing, जहाँ पर सारी की सारी चीजें already decided हैं कि इस तरीके से ही questions पूछे जाने हैं. That's when we do standardized interview. So far in my career, I don't think I have ever used standardized interview, to be honest. जरूरत ही नहीं पड़ी, but maybe it's just one of the types of the interview. That's why we've written down here. So that is the reason I don't have a reference to it कि कैसे करा जाता है. Persuasive interview is to persuade somebody. स्पेशली जब हम सेल्स ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, देन वी कंडक्ट दीज पर्सुएसिव इंटरव्यू. आप जब भी सेल्स के लोग हायर कर रहे होते हो, वहां पर आपको उनके साथ ये जरूर करना होता है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज सेल्स एक ऐसी जॉब है जहां पर उनको पर्सुएशन आना चाहिए. परसुएसिवनेस कैन बी वन ऑफ द स्किल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट परसुएसिवनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट को या कस्टमर को ये लगे कि मेरे पीछे ही पड़ गया है. राइट नाउ यू मस्ट बी सीइंग बहुत सारे, अगर आपने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस वाले बहुत परसुएसिव होते हैं. बहुत परसुएसिव इन द सेंस, अगर आपका नंबर उनके पास पहुंच गया और आपने एक बार ये कह दिया कि मुझे इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस लेना है, बस उसके बाद फिर आपका पीछा नहीं छूटता. नो मैटर व्हाट यू डू, इवन इफ यू गेट अग्रेसिव, यू गेट रियली हार्श विद देम, स्टिल दे डोंट. एंड आई डोंट नो किस तरीके का क्या करते हैं वो लोग कि दे डोंट टेक इट ऑन देयर ईगो. बिल्कुल भी नहीं. आप अग्रेसिव होकर भी मना कर दे हो तो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई थिंक ओवर इट, आपको बता देंगे. थोड़े 4 दिन बाद फिर एक मैसेज आ जाएगा कि कुछ सोचा मैम आपने, कुछ सोचा सर आपने, समथिंग और द अदर. सो यू कैन लर्न दिस परसुएशन स्किल्स एक्चुअली फ्रॉम देम. और सेल्स में भी ये बहुत काम आती हैं. सो दैट्स व्हाई द परसुएसिव इंटरव्यूज इज ऑल अबाउट टू चेक योर परसुएशन लेवल, how good you are in convincing other people, how good in terms of taking a rejection on your face. That's very important because जब आप sales में हो, और talent acquisition is part of the sales also that we manage in HR. जब आप hiring कर रहे हो, you're trying to convince people to come and join your job company, right? अब 50 लोगों को आपने कॉल किया है, 50 में से 20 ने मना कर दिया कि I'm not interested. सो वहां पर अगर आप उनका रिजेक्शन अपने दिल पर ले लोगे कि यार मेरा पहला इंटरव्यू ही ऐसा हो गया, उन्होंने मुझे मना कर दिया एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, फिर आगे काम करने में मजा ही नहीं आएगा. सो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर साइकिल एंड लाइक सेल्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. परसुएशन अगर आपको आ जाती है तो आप उन्हीं 20 कैंडिडेट में से 10 को कन्वर्ट भी कर सकते हो कंपनी ज्वाइन करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंप्रूव हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड यू विल लर्न. इनिशियली अगर आप अपने नोट्स लेते हैं जब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने नोट्स ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपसे फॉल्टर हुआ, कहाँ बेटर हो सकते हैं, शुरू का वो जर्नलाइजेशन जो हम करते हैं ना,
इसको हम जर्नलिंग कहते हैं, जी सब कुछ लिख लिया अपने बारे में कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं खुद, बिकॉज सेल्फ इवेल्युएशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन. नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू योर इंटरव्यू कॉल्स जो आप कर रहे हो, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चल जाता है क्योंकि आप अपने सीनियर्स को देखा होता है बात करते हुए. सो यू गेट टू नो कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ सही हो सकता है, कहाँ बेटर हो सकता है, कैसे परsuasiveness और आ सकती है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां मैं उनसे बात करके कुछ कर सकती हूँ. सो मुझे, मैं आपको पर्सनली बताती हूँ मैं क्या करती थी इनिशियली जब इंटरव्यू स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आते थे. सो हम क्या करते थे कि कोई भी हमें मिल गया, इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, सो स्टिल मैं फोन नहीं रखती थी या बात करना नहीं छोड़ते थे. आई यूज टू स्टिल आस्क देम कि कहाँ से हैं, क्या है, कौन कौन है फैमिली में, और कुछ ना कुछ बातों में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन निकाल लेना कि ओ आई नो दिस प्लेस रियली वेल, वहां पर ऐसा होता है, या यू नो दिस बुक इवन आई हैव रेड. कोई भी ऐसा एक कॉमन टॉपिक आप ढूंढ लो जहां पर आपको लग रहा है कि बातचीत ज्यादा बढ़ सकती है. वो बातचीत जो खत्म होने वाली थी आपने 10 मिनट भी बढ़ा ली, वहाँ आपका इंप्रेशन ही अलग पड़ जाता है. Right? So this is how you can try and become more persuasive without sounding very cheap, without sounding that you are very pushy, without sounding that you are after that person's life. Right? So this is what we used to do. And over a period of time, it has helped. राइट. अभी भी जब भी हम कहीं जाते हैं जहाँ मुझे लगता है कि रिजेक्शन आने वाला है सामने से, वहां बात ही नहीं करते हैं इसके डायरेक्ट टॉपिक के बारे में. देन आई ट्राई एंड टॉक टू देम अबाउट उनके इंटरेस्ट क्या क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं. कोई ना कोई, अब इतने साल हो जाते हैं तो कोई ना कोई कॉमन लिंक निकल आता है बात करने के लिए, कुछ भी मिल गया. कॉमन लिंक नहीं भी हो तब भी आपने झूठ बोल दिया कि अच्छा आई नो दिस वेरी वेल, और वहां से बात शुरू कर दी. द आइडिया इज टू कीप द टॉक गोइंग ऑन, बिकॉज एक बार फोन रख दिया या सामने से बातचीत बंद हो गई, तो फिर उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है. एंड दिस कैन हैपन व्हेन यू आर रियली रियली वेरी eager for the candidate to join your organization. फिर आता है अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. स्ट्रक्चर्ड आर वेरी वेरी क्रिस्प क्लियर, क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स भी सबको पता होते हैं कि क्या क्या बोलने वाला है. वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अबाउट दीज थिंग्स. इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बहुत हेल्प करता है, स्पेशली फॉर पीपल जिनको नहीं पता कि किस तरीके से इंटरव्यू लिए जाते हैं. सो ऑल द क्वेश्चंस आर रिटन, उनके आंसर्स क्या आ सकते हैं वो भी लिखे होते हैं, सो दैट यू नो कि मुझे क्या सुनना है सामने वाले से. एंड समवेयर और द अदर थोड़ा सा उनका चेंज हो सकता है तरीका बात करने का, बट जनरली आंसर्स आर वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन. राइट. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कैन टेक एनी शेप एनी टाइम. Again, there are no question and answers written down. There is no formal, there is no format, but you are still conducting those interviews purely because you want to understand the person more. यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जनरली कहाँ यूज होते हैं, जैसे आप कोई बहुत सीनियर लेवल का एम्प्लॉय कंपनी के अंदर लेकर आ रहे हैं. जैसे जब हम लोग डायरेक्टर लेवल या सीईओ लेवल की हायरिंग करते हैं, यू डोंट आस्क देम अ सेट ऑफ क्वेश्चन कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर सैलरी, व्हाट्स दिस थिंग. वी डोंट आस्क दीज थिंग्स. टू स्टार्ट टॉकिंग टू देम अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस मोर. So how their experience have been in the company in those positions. क्या क्या उन्होंने learn किया, what are the major learnings that they have, क्या challenges they faced, and how was the problem solutions that they got for those challenges. Right? So different kind of things. That's why it's unstructured, क्योंकि आपको नहीं पता होता किस flow में जा रहा है. It can take any shape depending upon the answers of the person who you're talking to. Right? And then last but not the least is evaluation interview. Evaluation interview is for the purpose when you are evaluating somebody's performance, right? So during the time of performance appraisal या evaluation जब हम करते हैं किसी का, तब हम उस टाइम पर evaluation interviews करते हैं. Now it has already has a form around it, because आप already एक form दे चुके होते हो उनको भरने के लिए, सेल्फ इवेल्युएशन फॉर्म, या जिसके अंदर रेटिंग्स होती हैं या उनके की एरियाज होते हैं जहाँ उन्होंने काम किया है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ. So you already have a फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू टू रेफर, जहाँ से उनको आपको रेफरेंस करना है, उससे क्या क्वेश्चन पूछने हैं. We will go to the evaluation interview a little bit about at the end of the session. Now interview skills कैसे आप अपने अंदर लेकर आ सकते हैं. 3 ways of preparing: pre-interview preparation, during the interview what is happening, and post-interview what is happening. It is from the perspective of both the sides, interviewer and interviewee both.
प्री इंटरव्यू इज सेल्फ एनालिसिस। आप जब इंटरव्यू आपको जाना है कहीं पर भी देने के लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, यू नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सेल्फ एनालिसिस दैट इज हैपनिंग। अपने आप के बारे में अपने आप को जानना कि व्हाट इज माय अचीवमेंट्स, व्हाट इज द स्ट्रेंथ्स, वेयर आई कैन गिव यू वीक, कहाँ नर्वस हो सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑल दोज थिंग्स हैज टू बी डन वेरी क्लियरली। Then analysis of your background. You need to understand your background very well, very clearly. Analysis of your background in the sense that the questions they can ask you for your past experiences, qualifications, कहाँ से आपने डिग्री ली है, colleges, universities, parents के बारे में, so all those things. So that analysis has to be done clearly. Then identify your accomplishments. जो भी आपके accomplishments है, जैसा भी मैंने बात किया, आपके strengths, accomplishments क्या किए हैं आपने, क्या achievements हैं, क्या आपने कॉलेज टाइम के अंदर कोई कम्युनिटीज करी हैं, या आपने कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, इंटरव्यूज कराए हैं ऑर्गेनाइज, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ दोज accomplishments, those things you can mention. Then, as we have already spoken about, your interests and your hobbies, that has to be very clearly. So whatever you're putting in your resume, you need to be clear about it, that this is the interest that I have. Even if as an interest I'm writing that, listening to music is one of the interests I have. I spend the time when I'm not doing anything, I spend my time in listening to music. So now the interviewer can ask you what kind of music. Suppose you say Bollywood, Hindi movies. What kind of Hindi movies music you like? Sad, romantic, or general music? What is the kind of thing? So you need to ensure that when you are writing this, you are aware about what your liking is, and then you can talk about that. Analyze your career goals. Very important that your career goals should be clear to you at the time of your first interview, because it's very important कि आप क्यों वहां उस इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, एंड जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ही और शी इज वेरी वेरी ईगर टू नो कि आपका करियर गोल क्या है और आप क्यों उनकी कंपनी में आ रहे हैं, वेदर इट इज जस्ट टू गेट अ जॉब, बिकॉज जॉब में पैसा मिल जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, सेम थिंग विल हैपन, बट अ करियर कैन मेक और ब्रेक यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका इंटरेस्ट जो है जॉब किस उसमें लेने जा रहे हैं, दैट हैज टू बी क्लियर। इसीलिए जनरली आप देखेंगे और आपको पता हो कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन 5 years टाइम, क्या करेंगे आप 5 साल के बाद अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करेंगे। सो जस्ट टू नो, दे डोंट वांट टू नो कि आप मेरी पोजीशन लेने वाले हो या एचआर मैनेजर बनोगे या सीनियर मैनेजर बनोगे, दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर लाइक दैट। दे वांट टू सी हाउ क्लियर यू आर इन योर गोल्स, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, मीन्स कि आपने अपना प्लानिंग कहाँ तक कंप्लीट किया हुआ है, राइट? सो दैट हैज टू बी रियली टेकन केयर ऑफ। देन सेल्फ एनालिसिस का दूसरा पार्ट आता है एनालिसिस ऑफ स्किल्स। अब योर स्किल्स वर्सेस द कंपनी, कंपनी ने जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा होगा, वहां पर आपकी स्किल्स क्या स्टैंड कर रही है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इतने अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, समझ लो, एंड एनालाइज योर स्किल्स कि मेरी कौन सी स्किल्स कहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, वेयर आई एम गोइंग टू टॉक की। अगर उन्होंने पूछा है कि आपको ट्रेनिंग लेना आता है, सो थिंक अबाउट कि मैंने आज तक ट्रेनिंग ली नहीं है, बट मे बी कॉलेज में हमने कम्युनिटी कुछ किया था, हमने वहां पर कुछ किया, सो जस्ट रिलेट थिंग्स दैट यू हैव डन, even if you have not done. How can you convince that you can be good in training? Is you're good in communication, you understand the subjects, you can go into the details of research for a content. So ये सब चीजें आप उसके लिए प्रिपेयर करके रख लें। So your skill versus the company skill for anything that you are going for the interview. Then why should they hire you? That is very important to answer. क्यों आपको कोई कंपनी हायर करेगी? Let me ask you this question now. थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करा देते हैं ना इंटरव्यू देने की। What is your answer to this question? Why should we hire you? सपोज मेरी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, मेरी कंपनी भी छोड़ दो, अभी आप उसके बारे में नहीं जानते हो ज्यादा। लेट्स से वाईएसआई के लिए आपको इंटरव्यू देना है, वी आर टेकिंग यू एज वन ऑफ द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर वाईएसआई, कि जो हम कोर्सेज चला रहे हैं, हाउ कैन यू सेल दिस कोर्सेज आउट द मार्केट। तो इसका क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, यू आर ऑल द इंटरव्यूअर्स हु हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब।
थिंक ओवर इट, क्या बोलोगे? व्हाई शुड वी हायर यू इन YSI? Take 2 minutes, it's okay. कितना जानते हो YSI के बारे में? जानते हो ना, मतलब कोर्स कर रहे हैं, so you know what are we doing here, what kind of courses we have. How do you think your skills are matching this job? Just think from that perspective. You need to convince the interviewer that why are you the best candidate. तो 5 कैंडिडेट्स हैं, प्रेरणा भी सेम इंटरव्यू के लिए आई है, वीथी भी, दिबांजना भी, काव्या भी, यंचिका भी, नितिन भी. Why should we select only one of you? So your answer needs to Ma'am, be. I may answer the question like this. I may be wrong, but I may answer like this. Ma'am, you may get better candidate from me, but as I'm a good speaker and I have a good communication skills as well, and I seek the opportunity and capture it on the time, I may um, I may think you should select me for this position. Hmm. Okay. And why do you think that other people will not have good communication skills? Ma'am, I'm not talking about the other people, but as I have done the degree from YSI only, so I think this Mhm. is my answer for it. Okay. Right. Good try. That's a nice way. Yeah. Anybody else? Yanchika? Yes, ma'am. Bolo, bolo. Why should they be hiring you? I will say, Sorry? It's okay. ma'am. Don't get nervous. Yeah. See, we know each other, right? एक class हम कर चुके हैं, so we know each other. Yes, ma'am. I'm not nervous. I'm thinking right now. अच्छा, okay. Nervousness is not good. Thinking is nice. Prerna? Ma'am, I'm excited about the. I would make an positive impact on the company, and I'm eager to contribute to the company. Okay. Good. But फिर भी आंसर नहीं आया. Why should we hire you? आपको क्यों select करे? Why should I leave Dibanjana and Kavya out of it? Why should I give you preference for this job? So think from the perspective that what you bring on the table. Like, Deepti said that I'm not sure about what other candidates are because I don't know. Right? As an interviewee, मुझे नहीं पता है. अभी तो चलो आप सब एक क्लास में हो. Otherwise, if you're going for an interview, तो random लोग आएंगे वहाँ interview के लिए. You may or may not know them. So you can always say what you bring the best for on the table for the job. अगेन इसमें आपने कितना पढ़ा है कंपनी के बारे में, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको कितना अच्छे से आप जानते हो, and then you have to convince. So the answer basically lies in the
question that people are asking you. How well you know about the company. So your research on the company is very important for this particular thing. हम इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं यूजुअली आजकल के जो हम लोग हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. आई जनरली माय फर्स्ट क्वेश्चन इवन नाउ इज टू देम कि कितना जानते हो आप कंपनी के बारे में. एंड व्हेन दे से कि हमने वेबसाइट पढ़ ली है, बस फिर वहां से तो ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है. देन आई स्टार्ट ग्रिलिंग देम कि वेबसाइट पढ़ी है तो बताओ तुम्हारे डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट हेड कौन है जहाँ के लिए तुम इंटरव्यू दे रहे हो. राइट. तो यू नो अगर आप एचआर में इंटरव्यू देने आए हो तो एचआर के बारे में इंफॉर्मेशन डली होती है वेबसाइट पे. राइट. हु इज लीडिंग, सीएचआरओ कौन है, एचआर हेड कौन है. नॉट टेल मी अबाउट दी एचआर हेड, क्या पढ़ा आपने उनके बारे में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट आ जाता है व्हाई वी शुड हैव लिंक्डइन. नेटवर्किंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है. आपने पढ़ लिया जॉब डिस्क्रिप्शन, आप रिसर्च कर रहे हो कंपनी के बारे में. बेसिक रिसर्च कंपनी के बारे में कहती है कि आप उनकी वेबसाइट एटलीस्ट प्रॉपरली सर्च कर लो, अच्छे से पढ़ लो. अबाउट सेक्शन, कंपनी क्या करती है इन डिटेल्स, एवरीथिंग इज रिटन आउट देयर. देन हु आर द की बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्या क्या इंटरेस्ट है उनके. देन हु आर द डिपार्टमेंटल हेड्स. बाकी डिपार्टमेंटल हेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो, जिस भी डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस डिपार्टमेंट हेड का नाम पढ़ लो. फॉर एग्जाम्पल यंचिका को हमें पता चल गया कि यंचिका इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट हेड. अब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है यंचिका के बारे में और कैसे पता करें. जो यहाँ लिखा हुआ है उनका ब्रीफ, उसके अलावा गो टू देयर लिंक्डइन, सर्च क्या उन्होंने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, इससे पहले कौन सी कंपनीज में थे, क्या क्या किया हुआ है. जस्ट रीड एवरीथिंग अबाउट द पर्सन so that you know who you are dealing with tomorrow in the interview. Right. That research point has to be very crisp. Right. And people would see LinkedIn में पता चल जाता है कि किसने आपका प्रोफाइल देखा है. सो जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे ऑलरेडी उनको, जो भी यंचिका है, जैसे हम यंचिका के बारे में सर्च करें, शी वुड हैव ऑलरेडी सीन कि अच्छा इतनी इंटरव्यू देने आई थी, शी सर्च्ड अबाउट मी. पहले ध्यान नहीं दिया होगा पर उसके बाद वापस देखकर उनको याद आ जाएगा कि दैट इज द सेम गर्ल हु हैज सर्च्ड अबाउट मी. सो वहां पर ऑलरेडी आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए थोड़े से, बिकॉज द पर्सन हैज टेकन, नॉट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड or the person is interested in me. This shows that how much research you have done and how much you are interested in taking this job than the other candidates who have not done that in our but और भी बहुत सारी चीजें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रोल. जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, हर एक कंपनी का जो प्रॉपर कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, रजिस्टर्ड कंपनीज है, उनको अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करनी होती है हर साल की. राइट. सो देर इज अ वेबसाइट जहाँ पर उन सबकी बैलेंस शीट्स अवेलेबल है. इट शोज क्लियरली हाउ मच आर दे इन लॉसेस, हाउ मच दे आर इन प्रॉफिट, कितना वो कमाने हैं. यू कैन लर्न नंबर्स अबाउट द कंपनी ऑल्सो. So depending upon how interested you are in the company and the career that you want to create in that company, you can search about the organization's health, कि उनका financial health कैसा है, कंपनी के पास wealth कितनी है, cash funds वगैरह कितने हैं, वो सब भी आपको पता चल जाता है. And good things and bad things about the company. So Glassdoor is one of the websites. अगर आप Glassdoor जैसे Instagram है, Facebook है, Glassdoor is similar platform. In Glassdoor, what you can do is people generally leave a review about the company they are working for. कंपनी टू कंपनी आप किसी के बारे में सर्च करेंगे, वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव सब तरीके के वो है. वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस का कोई रोल नहीं है दैट दे कैन बैन समबडी और दे कैन आस्क समबडी. इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन टॉक एनीथिंग अबाउट. तो वहाँ मैनेजर अगर अच्छा नहीं है उसके बारे में लिखा होगा, अगर कोई एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है उसके बारे में लिखा होगा, लर्निंग कल्चर नहीं है उसके बारे में लिखा होगा. सो पीपल कैन राइट. So how can you know about a company in details when you know what employees who are already working there think about that company, or people who have already left thought about that company? Right. So this gives a very good thing. So Glassdoor को always research करके then you can do that. So तब इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. Why should we hire? Right? Then research का आइडिया है, मैंने आपको बताया दिया ऑलरेडी about the company, about position. एकदम अच्छे से रट लो कि क्यों आप पोजीशन में इंटरेस्टेड हो, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा है, और हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो लाइन लिखी है उसके आगे आपकी कौन सी स्किल काम आने वाली है. राइट. बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट टू आंसर दोस थिंग्स. इतना डिटेल में जाते नहीं है, बट यू नेवर नो व्हेन कैन विच आंसर कैन रियली बी सपोर्टिव टू यू. सो प्री इंटरव्यू के बाद आता है इवैल्यूएशन.
This is a research, that's why I've just put it here कि research कहती है 57% of job seekers across all career levels. It's not just about freshers, it's about any other career level as well. View cultural fit as important as pay when evaluating job opportunities. So आपकी research तभी मैंने बोला कि Glassdoor पे देखना कि how culturally you are fit for the organization, because culture to culture बहुत सारी different चीजें हो जाती है organization में. Some organizations are very strict in terms of बिल्कुल लूज टॉक अलाउ नहीं करते हैं, कोई गॉसिप अलाउ नहीं करते हैं, डोंट दे कांट अलाउ टेकिंग ब्रेक्स आल्सो. लंच ब्रेक होगा हाफ एन आवर का, उसके अलावा वो बहुत स्ट्रिक्ट है. इनफैक्ट देयर इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई एम डीलिंग राइट नाउ, एंड वहां मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है. पीपल डोंट इवन स्माइल एट ऑल, एंड वो हर लेवल पर है, राइट फ्रॉम द सीनियर 30 years ओल्ड कंपनी. ना उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्माइल करते हैं, ना कंपनी के मैनेजर्स. मतलब स्माइल मतलब कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं. आप उनको हेलो कह दो तब भी वो हेलो भी इतना सीरियस आता है. एंड फॉर somebody like me, because I'm generally in a very happy calm mood all the time, so I don't gel well with such. तो मुझे बात थोड़े टाइम मुझे लगने लगा कि I don't know whether I am the right fit for the organization as a consultant also or not. बट लेटर ऑन धीरे धीरे जब पता चला तो पता चला कल्चरल ही ऐसा, वो 30 साल से उन्होंने ऐसे ही डेवलप किया है. दे डोंट गॉसिप, फालतू बैठ के बात नहीं करते हैं कंपनी में कहीं भी, तो वो हंसी मजाक का कल्चर ही नहीं है. पर धीरे धीरे वो आइस ब्रेक करने में टाइम लगा, 3-4 महीने बाद. नाउ दे आर स्टिल एट दैट लेवल कि एटलीस्ट जब आप हाय हाउ आर यू कर रहे हो तब थोड़ा बहुत दे आर टॉकिंग टू यू इन अ नाइस मैनर. सो यू नो दिस इज हाउ कल्चरल फिटमेंट हैज टू बी चेक्ड. इमेजिन अगर फुल टाइम जॉब करना होता मुझे इस कंपनी में, तो आई डोंट थिंक आई हैव एवर चूजन दैट कंपनी फॉर अ फुल टाइम रोल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, because I would not have survived. Because even as an HR techniques of mine, I generally try and prefer कि ह्यूमर आए कहीं ना कहीं आपके बातचीत में. आप इंटरव्यूज ले रहे हैं या आप इवेल्युएशन भी ले रहे हैं, सो दैट पीपल फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू. इट कैन नॉट बी सीरियस ऑल द टाइम, यू कैन नॉट बी राइट. फनी नहीं रहेगा लाइफ में तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन फॉर द लाइफ. Then 75% of recruiters stated that cultural fit is more important than work history and experience. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने जा रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट कल्चर रोल प्ले करता है इसके बारे में. हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ नोइंग द कल्चर इन डिटेल. अब प्री इंटरव्यू की चेकलिस्ट क्या है, क्विकली जस्ट टू गिव यू हाईलाइट कि आपने 2 घंटे पहले इंटरव्यू के क्या क्या कर लिया. रूट आपका चेक है, जहाँ आपने जाना है इंटरव्यू देने के लिए, फेस टू फेस इंटरव्यू है, ऑफिस जाना है. आपने पूरा रूट मैप आउट कर लिया है, आपके पास कन्वेंस है अपना, गाड़ी पे जा रहे हो तो कार है, स्कूटर पे जा रहे हो स्कूटर है, प्राइवेट टैक्सी ले रहे हो टैक्सी है, व्हाटएवर वे यू आर डूइंग, यू नीड टू बी प्रिपेयर अबाउट दैट. ड्रेस क्लोथ रेडी है आपका, जो भी आपने पहनना है, एब्सोल्युटली क्रिस्प आयरन क्लोथ्स, कैनॉट लीव विद आयरनिंग आउट ऑफ दैट. Shower, shave, hair, brush teeth, very important. Shave obviously is for men, yeah, depending upon कि हमारी needs क्या है. Hair, brush teeth, everything has to be clean, proper. कॉपी ऑफ रिज्यूमे एक्सेट्रा प्रिंटेड आउट, चाहे कितना भी हमने रिज्यूमेस भेज दिया हो कंपनी के पास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिल कैरी अ कॉपी विद यू इन हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी नहीं है बाई चांस, बिकॉज द सिस्टम्स आर लाइक दैट डीड दिस, तो पेन ड्राइव के अंदर भी लेकर जा सकते हैं, दैट ऑल्सो वर्क्स वेल. 15 minutes before the interview, take a strong breath mint. Generally, I prefer that. Sometimes you never know कि अब breath mint से क्या होता है. It's not about कि आपके कुछ गलत स्मेल आ रही है या वो है. Breath mint generally gives you a fresh breath of air अपने आप ही. You feel good about having something in your mouth. You check your teeth, hair, tie, zipper, सब कुछ चीजें properly बंद हो, अच्छे से हो. Everything needs to be there. Put phone on silent and vibrate mode so that the phone doesn't ring while you are in the interview. Very important tip. फोन को हाथ में भी नहीं लेकर रखना है. फोन should always be either in your bag or somewhere on the table side पड़ा रहना. You should not be playing with your keys और कुछ भी, जो भी आपके हाथ में चीज है, पेन है या कीज का कुछ गुच्छा है या कुछ भी है, you should not be taking anything in your hand except the paper which is your resume. Nothing else should be in your hand. Then visualize yourself crushing it, in the sense that you need to visualize yourself कि मैं अंदर रूम में बैठा हूँ, बैठी हूँ, and I am really doing best in my interview. That really helps. So visualization exercises obviously plays a major role, but again that depends upon interest to interest whether you believe in those things or not.
right? We generally conduct meditations for visualization, so they are very powerful technique to learn and get to know about things, and it works well. फिर ड्यूरिंग जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तब आपने क्या करना है, आप ड्रेसिंग अप तो हो ही रखा है, आप तो सब चेक कर लिया है, यू आर रेडी विद दैट. ट्राई एंड नॉट वेयर टू, बिकॉज जनरली हम गर्ल्स क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हील पहन लेते हैं कॉन्फिडेंट दिखने के चक्कर में, और वो ऐसा ना हो कि वो मुड़ रही हो या पिंच कर रही हो, शूज आपका इनकम्फर्टेबल हो. सो वियर दैट शूज विच इज वेरी कंफर्टेबल. And the best heels for interview is just 1 inch heel, 1.5 inch heel, not more than that. Flats बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए because आप confident नहीं लगते हो और आप थोड़े से लंबे लगते हो when you are giving interview. So this is all about power dressing, right? There is one is dressing up, one is power dressing up. Power dressing up is basically talks about the tips when you are dealing with these things, and you want to ensure that you are the more powerful candidate than the interviewers also. कलर्स ऐसे पिक करो. पीपल जनरली से कि ब्लैक ग्रे ब्लू करने चाहिए. आई प्रेफर कि कलर वो चूज करो जिसमें आप बहुत ब्राइट दिखते हो. You feel good about wearing that color. So my favorite colors for interview, if I am going to give interviews, is either yellows or reds or blues, जिसमें मुझे calmness आती है, जिसमें I feel comfortable. Because I love those colors, so I really want something colorful on me. Black is obviously about power, but you cannot wear black everywhere in all the interviews. Well, these are my personal thing, but majority of the interview skills people will tell you black is very powerful. It brings different kind of power and all that. But so depends upon your own interest. You can do that. Punctuality very important. You cannot be late for your interview. ऐसा भी नहीं होना चाहिए आधा घंटा पहले पहुंच जाओ ऑफिस के अंदर. अगर आप बाई चांस पहुंच गए हो आधा घंटा पहले, डोंट गो इनसाइड द ऑफिस हाफ एन आवर. Wait somewhere else, and then 10 minutes before the interview, just reach at the reception and tell them that you are there. So punctuality is utmost important. Even for video conferencing, phone calls, very importantly, अगर आपको किसी ने बोला है कि 6 बजे इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं या 6 बजे आपको कॉल आएगा, 6:05 तक कॉल नहीं आया है, try and send a message to the interviewer या recruiter कि मेरे पास कॉल नहीं आया है, just to let them know that you were prepared and the other person is delayed. Building rapport, very important that you build a rapport with the person who is going to take interview, and there is no harm asking them questions as well. Right? It's not just about, because interview is not about you answering only. You need to know about the company, you need to know about the person, you need to know about different things about the company. कल्चर कैसा है, सैलरी के कौन से बैंड्स है, किस तरीके के हैं. अगर आपको नॉलेज ऑलरेडी है तो आस्क दोज क्वेश्चंस जहां आपको थोड़ा बहुत आंसर के बारे में आइडिया है कि ये आने वाला है. राइट, अगेन फ्रॉम योर research you can easily get into these details. Body language, calm, composed, confident. Nervousness है, so breathing exercise कर लो इंटरव्यू में जाने से पहले, so that you are not really feeling nervous. So प्राणायाम बहुत काम आता है. प्राणायाम is not really just one of the techniques जो हम सिर्फ योग के लिए यूज करते हैं. प्राणायाम is, trust me, one of the best techniques that interviewers can use, especially breathing in and out करके 3-4 बार आपने अगर कर लिया तो you start feeling relaxed about whatever you are going to face, right? So इसीलिए breathing very important. Body language should not be very slouchy. अब अगर आप चेयर पे बैठ गए हो एकदम हाथ पांव फैला के, it's not really good. You need to show that you're confident and yet you are the master of your own body. Okay? So that is the kind of body language you need to show. बहुत पूरी रात जाग के नेटफ्लिक्स भी देखा है और तब भी अगर आप रेडी नहीं हो इंटरव्यू के लिए, स्टिल डोंट शो इट. योर आईज शुड टॉक मोस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. यू नीड टू फील लाइवली अबाउट द होल प्रोसेस. और जनरली हम लोग क्या करते थे अपने टाइम में, जब हम पहला इंटरव्यू देने 2-3 इंटरव्यू देने जाते थे, तो वी यूज्ड टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो मिरर गिव्स यू कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको अपने फेस एक्सप्रेशन दिख रहे हैं जो जनरली आपको कोई बताता नहीं है. कई बार क्या होता है, हम बहुत फनी फेस एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं इंटरव्यू देते हुए या जनरली बात करते हुए भी. एंड बिकॉज दीज आर सर्टेन थिंग्स जो हमें कभी किसी ने पढ़ाई नहीं होती है, सो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट दैट. राइट, सो मैं बहुत फनी फेस बनाती थी अपना, मतलब आई पर्सनली टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ. सो मुझे मिरर में देखने के बाद रियलाइज हुआ कि गॉड, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक. बहुत ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं.
So that's how over a period of time I learned to control facial expressions while giving interview. So that's very important thing that you need to do. Even for any kind of communication, if you want to improve, mirroring is one of the best techniques that can help you out. One is mirroring, second is watching English movies. अगर आप English language को सीखना चाहते हैं और better करना चाहते हैं, so watch English movies, mirror उसी टाइम पर किस तरीके से वो डायलेक्ट्स बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड कैसे बोल रहे हैं, then you will be able to speak the same thing in a similar kind of fashion. Also body language is about, like I said, fidgety नहीं होना है, बालों को बार बार नहीं छेड़ना है, खुजली नहीं करना है सर पे, कहीं पर भी किसी भी आर्म में हम नर्वस हो जाते हैं. दिस कम्स ऑटोमेटिकली. इट्स अ ऑटो सिस्टम ऑफ द बॉडी कि जब आप नर्वस हो या आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो तो आपके हाथ चलने लगते हैं कहीं ना कहीं किसी भी चीज में. आप शर्ट ठीक करने लग जाते हैं, कॉलर्स ठीक करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहता है. कान के ऊपर उंगली रख देते हैं, इयरिंग चेक करने लग जाते हैं, समथिंग और द अदर स्टार्ट्स हैपनिंग. बट यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर साउंडिंग एंड लुकिंग सो कॉन्फिडेंट कि इनमें से कोई भी चीज नहीं कर रहे हो आप उस टाइम पर. Then confidence, of course, the more you practice, the more confident you become. See, ultimately, you need to get to know कि result क्या हो सकता है interview का, either a yes or a no. इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. So be prepared. You already know that maximum somebody can do is just a no. That's it. If you're not suitable. And when you say you get a rejection, I generally don't call it a rejection because I feel कि आपको कोई ना कह रहा है तो आपके लिए और बढ़िया अच्छे दरवाजे खुलने के लिए बचे हैं. That's why people are telling you no. So always go with that confidence कि I am going to crack it. If not, then maybe a better opportunity is waiting for me. Go with that confidence. But उस confidence को over confidence की तरफ नहीं ले जाना है. That would become too aggressive and too arrogant with the interviewer. Right? So these are very important tips that needs to be taken care of. Then few more things which I've already told you just in the form of picture to make you a little cool about it, make yourself comfortable, have a firm handshake. Yes, now handshake is very important. अगर ऐसा culture है company का कि जहाँ सामने से आपको को handshake के लिए वो कर रहे हैं, no matter you're a girl or a boy now, handshake is a very common practice in corporates. So you need to have a very firm handshake. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उंगलियों से उंगलियां ऐसे टच हो गई and that's it. You need to have proper. This is the right way of handshake. Not too strong, not too just bulging it in your hands, but इतना कि आप उनको firmly उनको shake करके आपने वापस ले लिया अपने हाथ. Right? No squeezing also happening. Maintain a straight posture. Body straight होना is very important. हम लोग बहुत ज्यादा slouchy हो जाते हैं कई बार चलते फिरते या ज्यादा कंफर्टेबल रहने पर, तो those things have to be taken care of. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है, ये हमारा एक दिन में चेंज नहीं होता बिकॉज बॉडी पोस्चर को आदत हो जाती है उस तरीके से बैठने की. सो द मोर यू प्रैक्टिस ऑफ सिटिंग विदाउट पिलो, इवन व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द बेड, सोफा पे बैठ रहे हो तो भी आप कैसे बिना पिलो के कितनी देर तक आपकी पीठ सीधी रख सकते हो, ऑल दीज थिंग्स कम्स विद दैट. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सोफास नहीं होते, यू हैव अ चेयर बेस्ट टू सिट ऑन, एंड दोज चेयर्स मे और मे नॉट बी कंफर्टेबल ऑल द टाइम्स. यू कैन मेक दैट कंफर्टेबल लेटर ऑन, अपना कुशन ऐड कर लिया, अपने लिए अपना कंफर्ट कर लिया, बट इनिशियली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चेयर हो. मैंने नहीं कोई ऑफिस देखा जहाँ की चेयर मुझे मेरे को कंफर्टेबल लगे पहले दिन से ही. नीड टू इधर गेट एडजस्टेड टू दैट, या फिर आपको अपना छोटा सा पिलो साथ में लेकर, या जो भी चीज समटाइम्स आपकी हाइट मैटर करती है. कई बार आप छोटे हैं हाइट में, कई बड़े हैं, चेयर एडजस्टेबल नहीं है, प्लास्टिक बहुत अनकंफर्टेबल है, पसीना बहुत आता है, एसी की डायरेक्ट हवा नहीं आती, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती है चीजों के. Then maintain eye contact. Already told you, eye contact is look here, never look into the eye so that people can see that you're looking into the eye. And आप कभी nervous नहीं हो सकते हो किसी की आंखों में इस तरीके से देखने में, because you're not directly gazing them. Smile whenever possible. See, for me at least it works really 100%. Because जब आप किसी की आइस ब्रेक करना चाहते हो तो आपको स्माइल करना बहुत जरूरी होता है वहां पर. For you should not look like that you are making fun of somebody. Don't smile at the wrong thing. So smile जब आप मिल रहे हो, या smile जब when you are going back from the interview and you are saying goodbye. So best way of doing that, या बीच में अगर ऐसी कोई बात आती है तो then you can always smile and say gesture of that you are with them.
Avoid fidgeting, like I already said, हाथ में कीज नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, nothing should be in, अगर पेपर भी है, फाइल है जिसके अंदर आपने अपना रिज्यूमे रखा है, should be a proper folder in which you have a proper file resume. Folder should be generally वो लेदर वाले अच्छे आते हैं फोल्डर्स, उनके अंदर फॉक्स लेदर वाले जो आते हैं उसके अंदर आप अपना सीवी ले जाओ, सो दैट कोई आवाज नहीं आ रही है, ना पॉलिथीन फटने की या ना प्लास्टिक खुलने की, कोई भी चीज नहीं आ रही है। वो वाले जो फॉक्स लेदर वाले वेल्व होते हैं उसके अंदर से पेपर आराम से निकलता है, रखा जाता है, एंड देन यू आर डन, दैट्स इट, राइट। ना वो मुड़ रहे होते हैं ना कुछ कर रहे होते हैं, सो इट्स अ वेरी साउंड वे ऑफ कीपिंग थिंग्स। करेक्ट हैंड मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत लोगों को आदत होती है कि व्हेन दे आर टॉकिंग, एंड सम पीपल बिकॉज दे आर इन वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, तो वो अपने हैंड जेस्चर्स बहुत यूज करते हैं बात करते हुए। सो जस्ट थिंक, प्रैक्टिस कि बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट्स भी नहीं हो रही हो ड्यूरिंग इंटरव्यू। द मोर यू कीप योर हैंड्स इन योर लैप या अपनी टेबल के चेयर के साइड में, द मोर कंफर्टेबल यू विल फील ऑल्सो टॉकिंग टू देम। सामने वाले का ध्यान बहुत ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज पे नहीं जाता, फिर वो आपसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। शो इंटरेस्ट, नाउ यू हैव टू शो इंटरेस्ट दैट यू आर हियर in an interview to know more about the company. Don't sound कि आप बहुत बोर हो रहे हो, आपकी आंखें ऐसे नहीं साउंड करनी चाहिए कि आपको नींद आने लग रही है बीच के अंदर, या आप बोर हो रहे हो, चाहे वो कितनी भी चीजें बोल रहे हो, क्योंकि कई इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं कंपनी के बारे में डिस्क्राइब करने में, पोजीशन के बारे में। अब कई बार ऐसा होता है हम पढ़ के जा चुके होते हैं ऑलरेडी, तो वो सब चीजें बोरिंग लगती हैं। बट डोंट शो दैट यू आर गेटिंग बोर्ड, डोंट शो दैट योर आईज आर स्लीपी, डोंट शो दैट यू आर yawning, राइट। ये तो खैर हर एक चीज के लिए भी होता है, मतलब फॉर एनीथिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन, नेवर शो दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। देन बी पोलाइट, जितना हो सकता है उतना पोलाइट। नेवर बिकम एग्रेसिव इन द इंटरव्यू, नो मैटर हाउ बैड यू वांटेड अ जॉब, और या आपको सामने से कोई इंसल्ट भी कर रहा है तो still your job is not to go into their level and be aggressive, just be polite, say thank you if they have not selected you, and come back nicely, wishing them best for their future, right? Then leave a positive note. जब भी आप बाहर निकले हमेशा उनको थैंक यू कहकर, चाहे उन्होंने आपको बता दिया है दैट यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोजीशन, स्टिल say thanks, handshake, and come back. Yeah. So every time, whenever you're leaving the interview, it should always be on a positive note. Then post interview क्या करना चाहिए आपको, जो अभी बताया, पोलाइट गुड बाय, फर्म हैंडशेक अगर वो इनिशिएट करते हैं तो। अगर आपको फीडबैक नहीं मिला है वेदर यू हैव क्लियर द इंटरव्यू और द how what, just ask them when will the answer will come from your side, or what will the feedback. In general, ask the interview that how do you feel talking to me, because it's my first interview, so I just need to know feedback from you. You are more experienced, if you can give me some tips. तो वहां पर ये क्वेश्चन भी आपका इंटरव्यू का दिमाग एकदम चेंज कर सकता है, right? And there is no harm asking somebody who is senior to you about the tips and the feedback, right? So every time when you can do, if you are confident and if there is a time, बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके हाथ में ये चीज नहीं होती है पूछना, इंटरव्यूअर के हाथ में होती है कि वो कब इंटरव्यू खत्म करके आपको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, राइट? सो जस्ट think if there is a chance of doing that, just ask them about the feedback. Now, no matter how the interview was, walk out with confidence. कभी ये नहीं दिखाना है कि that you are rejected और आप सॉरी फील कर रहे हो अपने बारे में ही, never show that to anybody, right? No matter how dedicated you are feeling or dejected you are feeling, how sad you are feeling about not getting a job, and that's a very human emotion कि हम किसी के लिए इंटरव्यू गए हैं, प्रिपेयर करके गए हैं, वी आर नॉट सिलेक्टेड, सो दैट सैडनेस इज बाउंड टू कम, आएगी आएगी, बट डोंट शो इट देयर। यू कैन वॉक आउट ऑफ द ऑफिस, यू कैन वॉक आउट ऑफ द कंपनी, एंड देन अगर रोना भी चाहते हो तब रो सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। क्राइंग आउट इज द बेस्ट थेरेपी दैट कैन बी देयर, but don't feel sorry about yourself in terms of that this is not the last interview that you are going to face, there will be many more. And then always make it a habit, once you are back next day, whether you have known the result, जब आपको रिजल्ट पता चल गया, just write a thank you mail. अगर आपको तब तक रिस्पॉन्स नहीं भी आया है कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, still write a thank you mail to the recruiter for arranging the interview and giving you a good time while you were there. It should not be a very lengthy 10-15 line की, should be a very crisp 3-4 lines email, and that's all.
that I'm thanking you for the opportunity for having me there. Thank you to the recruiter for arranging, and thank you for the interview for the tips that he or she had given me during the interview. Simple. Looking forward to hearing from you and your signature, and that's all. Right? So that's how the interview should end. Now coming to the interview part कि अब आप क्या करोगे इंटरव्यू में ये हैं 10 questions that generally all the HR manager in India ask. सारे नहीं पूछेंगे इसमें से 5 पूछेंगे 4 पूछेंगे. Every HR manager is trained in a manner that they will ask these questions for sure. Somewhere or the other, directly these questions or indirectly यही questions किसी और language में मतलब change करके language को. So first question is, tell me about yourself. So what do you think you are going to tell the interviewee about yourself? What is the best answer for the question? I am not going to give you the answer. ये 10 के 10 answers मैं आप लोगों से ही पूछने वाली हूँ. I'm just going to correct you and give you the tips. What's your name and from where you belong? What's your qualification? Okay. ये तो question And पूछ रहे हो ना? who? If I'm No, asking you this question as an interviewer, tell me about yourself, Yanchika. What are the yes, answers you're ma'am. going to give? I'm going to say, first of all, thank you for giving me this opportunity. And then, my name is Yanchika Verma. I am belong from Delhi. I did my BTech from this university, and I tell about my family background. That's all, ma'am. Good. Right. But see, try and bring something and tell me about yourself which is not written in your resume already. Okay. कि आपका नाम, आपकी qualification और experience थोड़ा बहुत लिखा होगा, right? Unless the question is by the interviewer is कि tell me something which is not written in your resume, or tell me something which is already there in the resume, or walk me through your resume is one of the questions. Walk me through resume is जो लिखा है एक बार आप मुझे बोल के बता दो, right? If that is not the questions, then tell me about yourself. So that means that I am interested to know those parts which are not there. I have not read in them. Right? So one or two things that you can bring up. And what are those things that you can bring up? About Yeah, my likes, correct. What likes? like my interest, what interest I have, But how's or your interest are going to help you get a job? है ना? ये वाले क्वेश्चंस Yeah. का आंसर पहले से प्रिपेयर रखो कि क्या आप ऐसा बोल सकते हो जो आपको आंसर दिलवा दे, I mean जॉब दिलवा दे. Better than the Okay. other candidates, right? So what can be my question, how I change this question when I take interviews, especially not for the junior ones, but senior level, mid-level hiring जब हम करते हैं तो I don't ask them, tell me about yourself. My question to them is, what is your story? So what is your story means that what is it that about Dipti that I don't know and I want to know? What is it about Debanjana that is not written there anywhere? और मुझे वो जानना है देवांजना के बारे में. Can Debanjana be only about the qualification she has, the parents she's born to, or the degree she has? No? नहीं ना? Debanjana can be much more. So what is that much more? So that is the answer to the question. That, and when you ask this question to yourself over a period of time again and again, what Yanchika is all about. So what is Yanchika all about? Is Yanchika all about कि मेरी शादी यहाँ हुई है, मेरे इतने बच्चे, मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है, I never talk about my husband and my kid for the first time. It has to be about me, you know. The person is interested to know who you are. Archana naam, I think they can easily search and they can find out that your name is Archana. Whatever your qualification, कहाँ से आप पढ़े हैं, ये सब चीजें आप आराम से निकाल सकते हैं कहीं पर भी. But what is not written there on LinkedIn and social media that you can be interested to know? About my skills. Correct. About your skills.
what kind of challenges you have faced in your life, can be personal life, can be, professional life, can be in the college, you can talk about an event that you led. I want to really talk about when you're asking me about a question about myself, I want to refer to this particular event I led. During that Yes, event, I ma'am. got to know that I have these strong skills, strong points. I was leading the team of 10 people. I could direct them to do the work. I could get the work done from them. So, this thing is indirectly highlighting about something that Chanchika has never written anywhere in the CV. और जगह भी नहीं होती है रिज्यूमे में इतना सब लिखने की. But when you're getting an opportunity to talk, why not to talk about that? Yes, ma'am. Right? So this question about what is your story, who you are, is very important to know. But first you have to know that, then only you will be able to answer. Right? So Dibanjana, what is more about you that we don't know? I could add in points about what I have done before. It may be in my school life, it may be in my college life. Like I can mention that I am a very driven person and I really like intellectual conversations. So I've taken part in debates, like as many debates Wow. that our colleges held. I have had a knack of doing that. Then that can also prove my communication skills. I can convey my points very well. I can mention how I have won quite a few of the debates and how I can Great. put my point very clearly and in a very vivid manner. Yes, maybe some of that I can add. Very nice. So see, even I didn't know this about you. Right? That came as a surprise because you were not answering to many questions in the classroom. I was having a lot of network issues today. I don't know why. I wasn't even in class Oh, for like 20 minutes. okay. Because I was wondering why. I mean, I didn't know that you're such good in communication, and yes, you were participating in debate. I have a very soft corner for people who participate in debate. I love debates. I've Yeah, had a soft corner for it from a very young age. wonderful. That's a nice thing to know. See, so we got to know one more new thing about the Banjana. Right? Similarly, all these questions I'm going to ask you, so just be prepared. Anybody can be asked any questions. So coming to the next one, how would you describe yourself? So this question is for Prerna. I would describe what kind of person I am, like Answer. Don't explain the question, answer it. Who are you as a person? Kavya, take your time, Prerna. Take 2 minutes, think about it, and then we'll come back to you. Keep yourself on mute. A lot of disturbance coming from your background. Yeah, Kavya, it's your turn. How would you describe yourself? Or what makes you unique? I think that's the question I should
So sorry, this was a power backup issue. All right, so it gave you us extra time to think over the question. So, yeah. Who's going to answer it now? What makes you unique? Prerna, you ready with your first questions? What describe yourself? Ma'am, I would like to describe myself as a person who values kindness, honesty, and I'm a kind of person who likes to learn new things and explore new things. Great. Okay. Okay. So, Kavya, we were on you. Third question. What makes you unique? You need time to think of it? Yes, ma'am. I don't know how to answer it. What makes you unique? You need to know about your talents, no? Which is unique. No? What is there in you that is not there in the Dipanjana or Prerna or Deepti or anybody else, even in me? What is the every one of us brings a very special talent, right? I don't know how many of you actually believe in spirituality from this perspective, not religious belief, but spirituality from the belief that we are here on the earth, whatever, I mean, whosoever has given birth to us here on the earth has given it with the uniquest talent. Every one of us brings that, right? आपका talent, or maybe हो सकता है एलन मस्क का talent same हो. But Elon Musk is solving the problem somewhere else, and Kavya can solve the other problems from the same talent. So, what is that talent? What is that uniqueness that Kavya has? And in fact, all of you need to think from that perspective. What makes Prerna Prerna? What makes Dibanjana Dibanjana? Right? These are not just name. Right? It's an identity that your parent has given. नाम हमें तो दे दिया कि कुछ भी नाम हो गया. शादी के बाद नाम भी change हो जाते हैं. But it doesn't change our personalities. Right? We bring forth our personalities in terms of what we do unique. So, what is that uniqueness that you bring on the table when you're doing an interview or for the company? Right? जैसे प्रेरणा ने बोला that, what was the answer that you gave, Prerna? How do you describe A yourself? As a person who values honesty and kindness, and I like to learn new things. Right. So, now about kindness, right? How can your kindness can be important in the organization? If the kindness is the uniquest factor for Prerna, how can that be utilized in organization? So think from that perspective. So being kind with people, I think, personally, and I think most of the people nowadays feel that being kind to each other is very, very important thing that we can bring on table, right? Because being kind does not mean that you are able to understand, that you are able to forgive for their mistakes in the organization, but you can handle those things in a manner that the other person does not feel bad about. Right? That's the kindness. That's what the kindness talks about. Right? So similar thing you have to know. Even I'm pretty sure that Prerna doesn't know कि kindness से वो क्या क्या कर सकती है organization में अभी. But she knows that kindness is one of the factors that is there. So now you have to relate that answer to what is the job description and which part of job description you can say that, okay, my kindness can solve these problems. If I'm interviewing for HR manager, I need to be kind with people almost on a daily basis. Every day, every time, every hour. Because if I am dealing with people, the most important factor is that I am bringing the kindness, the way politeness, the way I'm talking to them. They should never be disrespected. They should never feel that I'm rude with them, no matter in whatever situation or mindset I am in. Right? So when people say, no, even now, after 20 years of being in HR, people say कि HR का बहुत सारे मीम्स भी देखोगे, बहुत सारे रील्स भी बनती हैं आजकल कि HR का जॉब क्या है? रंगोली बनवाना ऑफिस के अंदर. If that is the job, then why would you require an MBA to create रंगोली? फिर तो आप किसी आर्टिस्ट को बुला लो ना. If that is the kind of thing.
So all these memes and all these things have actually taken down the HR from the organizations. HR is one of those functions जिसका major काम है, सबसे important काम is to create a balance between what your management wants and what the people working in the company wants. Because वो लोग कभी भी एक level पर नहीं हो सकते हैं. Sometimes you have to convince the management or the leadership team or the board of directors to come and give something, and sometimes you have to tell the employees to get little strict, follow the policy guidelines, because that's what the company wants from them. For that role, now what are the uniquest thing that you have in you that can be brought into the picture? You have to talk about these things, right? So understand the role really well for whatever job description you have read, then you can relate these things. So from one job to another, you might change this question also, how you describe yourself or what makes you unique, right? Fourth question is, why do you want to work here? Now, ये question पिछली बार भी आया था, अभी तो just try and give answer for this one. Who wants to give? Deepti? Would you like to answer this? Why do you want to work in the company? Ma'am, about this answer, I think I should describe about the describe about myself as an asset for the company. Yeah, also about good things about the organization also, no? Company people wants to know about what good About the things whole they have. description about the company. Yes, so Glassdoors में से आपने जो पढ़ा दो तीन चीजें या आप किसी को जानते हो उस organization में, what are the good things about the organization? Try and talk about that. Very importantly, Yes. that I have heard that you give good career advancement to people. Right? I have seen that 4-5 people, if you know the name, name them. If you don't know the name, 4-5 people have got multiple promotions and they have grown within the company. Right? So just say that, I want to work somewhere where I can also get that kind of opportunity because I love to get stable. I love to spend most of my time in one organization, giving them the best that I can. Things like that. Right? Depending upon, again, role, depending upon what you have read, I'm just giving you certain tips. Then what motivates you? No, fifth question. What interests you about this role? What will Ma'am, you answer in that? Yeah, please tell me. Ma'am, suppose I'm going for an interview for an HR post, Mhm. and the question is, what interested you about the role, About this role, yes. about this role. So I may answer this question that I have a good mouth and I love to listen the people and know about their journey till here. Mhm. So I may answer it like that. Great. Good. So depending upon again the role, you have to describe this answer, but you need to understand the role properly. What happens in this organization in that role when you can answer that. Next is what motivates you. What is it that motivates you on a daily basis? ये तो simple question है. इसका आंसर तो आना चाहिए सबको ही. I think what most motivates me in my daily life is to get independent. To get independent soon. Okay, very cool. Dibanjana, what motivates you? Get the opportunity to face the challenges. Try to learn something new every single day, not to have a very mundane everyday life. That's Very where nice. challenges take place. Yep, good. All right, Yanchika, Yes, ma'am. what motivates you? Quickly. It should be just one-liner. We should be prepared about this, every one of you. What motivates you? क्यों सुबह उठते हो? क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं इसीलिए?
To learn something new daily. Something new. Okay, good. To learn something new. Prerna, what is it that motivates you? Ma'am, I want to be financially independent in my future. That's what motivates me. Great. Kavya? And to support my family in financial conditions. Great. Very nice. Right, so this is the kind of answers that we are looking for, that you should remember every morning. Why are you waking up every morning, and what is it that you're preparing for in future? So very clearly, you see, independence is about two things. One is independent, that you can get up, you're physically independent on your own, which you all are. Second is about financial independence. That is very important to achieve. So no matter how hard your parents try for you to get married after graduation, post graduation, don't fall in for that. Always try and become financially independent, because even after marriages, you know what happens? Most of the marriages are failing these days because there is only one person who is responsible for bringing money. हम लोग कभी पता है ये सोचते ही नहीं है कि why should husband will have that thing? Why should a male member should just have this responsibility of bringing money to the table? कई बार ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मेल मेंबर ऐसा भी चाहता हो कि मुझे सिर्फ हाउस हस्बैंड बनना है, या मुझे घर पे रहकर काम करना है, या मुझे काम नहीं करने जाना है. दे आर थिंकिंग अबाउट दैट. ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी पीपल हु माइट बी थिंकिंग अबाउट इट, बट हमने सोसाइटी के, अभी हम बायसेस की बात कर रहे हैं ना, सो दिस प्रेजुडिस इज सो हार्ड बाउंड फॉर द मेन कि उन्हीं के साथ ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की वो क्यों है. जब आप एजुकेशन दे रहे हो, जहाँ जिस फैमिली में a man and a girl is getting equal amount of education, why are we asking only a man to bring the money on table? Why not the woman? Yes, I understand, बच्चे पैदा करना men का काम नहीं हो सकता, but बच्चे पालना they can do really well. Right? I tell you my own example, and I feel very proud of talking about it. When I was at that verge, when I was having my child, I was on the top of the career. Top of the career means I was on the bestest of the job that I could be, and it just came suddenly. We were not planning for it, but it happened. And I didn't want to avoid it because obviously it was one of the opportunity for motherhood. So I chose motherhood over that job. But then came a time when I had to go back. And because the company said you have to come back, we can just give you a year of time for yourself and all that. But 6-7 महीने में ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चरिंग होने वाला था कंपनी में that I had to join the company back. And then the question came in, who will take care of the child? Because I don't have my parents, my husband's parent was not there. So हमारे पास choice ही नहीं था, दोनों में से एक को छोड़ना था career. So he said, I will look after him, don't worry. So we had a very hard choice to make, that who will lead the career for that much period of time, or not lead the career, or be a laid back career. Not really strive for the promotions and all that, because company में generally ऐसा हो जाता है. So he took that stride for me because he knew that how important that role was for me at that particular time period. Right? So it is very important to understand that what your partner also wants. It's not just about कि male ही सारी responsibility करेगा. So financial independence is not just about becoming you independent, but ensuring that your family is also secure around you. So now, because my son has always seen me working, I see a great change in him. बाकी बच्चों में और he's 13 years now, so he is very independent. He knows how to cook, he knows how to do all the things. He can do jhadu pocha, he can do, you name it, and he can do that work at home. Why? Because both the parents were also doing the same thing. My husband took this responsibility of cooking at home most of the times. He's a great chef. He went to Master Chef, so he learned all those things. So this is how a family can become a very good, positive family, can give better atmosphere their children when both the partners. हम इक्वल की बातें बहुत करते हैं कंपनीज के अंदर भी और पर्सनल भी, but we don't really follow that. And I'm not saying it from the perspective कि women को आगे बढ़ना चाहिए and all that. It is from both the perspective. You need to know कि आपके घर में अगर कोई मेल मेंबर है who doesn't want to work, because स्ट्रेस सबसे हैंडल नहीं होता है, और कॉर्पोरेट्स के जो डिफरेंट टारगेट्स होते हैं सबके बस की बात नहीं होती है हैंडल करना. So you need to know कि उनका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है and what they want to do. So that's very important thing that you need to be sure about.
Next question आता है, what are you passionate about? Same thing that we are talking about. Very important to know what change you want to bring into the organization or to the world. Right? Working in an organization, even at the bestest of your career, cannot bring that change that you're passionate about. Right? That change can happen when you do something different. Right? Again, at the peak of my career, I decided I will leave my job. I was at a very good package. Everybody told me, बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हो, इतनी अच्छी कंपनी में सब कुछ मिल रहा है, कार है, फैसिलिटीज हैं, सारी चीजें हैं, you will leave all that and you will become nobody. Because जब आप अपना काम शुरू करते हो, nobody knows कि अर्चना is this designation. उससे पहले there was a designation, vice president or director every time whenever you have changed the company. बट तब कोई नहीं जानता आपको. सेम लोग जो आपको पहले जानते थे आपकी कंपनी से, वो भी आपसे बात नहीं करते बिकॉज यू नाउ डोंट कैरी एनीथिंग विद यू. Right? So it took time from that phase. So that passion, if it drives you, can bring that change. Now, after 276 companies that we have changed in 8 years, now we can always come back. अब हमें काम के लिए जाना ही नहीं पड़ता. I mean, now the situation last 3-4 years, touchwood, is that people know कि ये काम कर रहे हैं and they एक बंदा दूसरे को रेफर, दूसरे से रेफरेंस मिलता रहता है. This is how you get. So your passion has to come forward with the kind of skills that you have and how you can transform your skills in a manner that you can really enjoy working whatever you are doing. Yes. Right? There was a time when I left everything, even my company, my household, my thing, because I became passionate about meditation so much. So I left everything. I joined proper guru in Himalayas, where I went. I spent a time of 1 year with him. I left my family completely because I was so boggled down to understand the question कि क्यों हम काम कर रहे हैं. That's why I'm talking to you about the spirituality part of it, is to understand कि आपने सब कुछ तो पा लिया, पैसा भी है आपके पास, इनकम भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है आपके पास, but still you don't know what you are here for. So that thing came only afterwards. I did those things. I'm not saying that you leave everything once, but it's very important to know that path where you want to follow. Then why are you leaving your current job? Next question. So why do you want to leave your current job? It's for the people who are already working somewhere. For freshers, it may not be there, but still, what do you think would be the best answer for this? If you're working in an organization today and you want to leave that and join some other, why would you leave one organization? There is very limited growth in that particular organization, not much chance to achieve greater things. I could not understand you. Sorry. Probably because there isn't much growth in the, like I'm not getting enough scope to grow in the organization. That could be one reason. Or I'm not getting enough job satisfaction. It could be the work environment, maybe things like that. Okay, agreed. So you can always talk about career development, but never say the wrong things, negative things about your current company where you're working or the company you are leaving. Never. See, because what happens is tomorrow you will leave work in this company and you might leave this company also where you are applying. Right? So they will feel that you're talking negative about all the companies that you work for. Talk about career growth, but in a positive manner. That I feel that I have reached a stage of stagnancy. There is nothing more for me in this organization, and I look forward to the growth in your organization. Again, referring to something that this organization is doing. That I've seen people growing in your company multifolds, that I've seen your way of promoting people is much different than them. Your culture is different. Things, reference point हमेशा होने चाहिए. Right? तभी आप comparison लेकर आ सकते हो दोनों में, whatever. Even if, see, the reason for leaving the past job is only for the monetary growth, then also you can say this point. People understand this. Obviously, you're leaving a job क्योंकि आपको better opportunity मिल रही है. Better opportunity can be work-wise, monetary-wise both. So you can always say that my financial responsibilities are increasing, and I don't think my current company can really do that right now at this stage. Hence, I'm looking forward for a better financial growth. Right? Simple answer, छोटे answers, but crisp answers that you are prepared and you know what you want in life. Right? People want to see that confidence. People want to understand that you are very thorough about the research
इस कंपनी के लिए भी, और यू हैव नथिंग नेगेटिव अबाउट द करंट कंपनी, चाहे करंट कंपनी कितना दुखी कर रही हो, मैनेजर रोज परेशान कर रहा हो, स्टिल नेवर टॉक अबाउट दैट एवर इन इंटरव्यूज. देन व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? सो क्या स्ट्रेंथ हैं जो आपकी हैं, लेकर आते हैं आप टेबल पर? हाउ विल यू डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ्स? अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है ना? If I Think about it. Sure. Or if I had to associate my strengths with this HR position itself, I could talk about how I can easily connect with people, right? I can also talk about how about my current skills. Like I have had degrees in psychology, so I have an idea on how people work and how I can apply that in my work, in my particular role. Absolutely. So, yeah, you are doing psychology, right? Your graduation is also. That's a wonderful reference point. Yeah. Okay. Very rightly said. So, because many of the times, I personally again feel that HR के लिए HR degree से ज़्यादा ज़रूरी psychology की degree रहती है. You need to work with different people altogether. Or some other form of, smaller certification or diploma or any degree that you can take in psychology related subject, very important thing. Even psychometric testing, right? YSI के course के साथ या इसके बाद do a course in psychometric testing for 3 months, 4 months. There are many organizations who are doing that. It will give you a way of evaluating people in a manner that you can understand what people are looking forward. Right? Practice करने के लिए there is a link. Again, I think वो link कहीं ना कहीं होगा. I'll search for it and I'll try and send it across to you. This particular link that I'm talking about, it's a website. They have all the psychometric tests जो भी बने हैं आज तक, उनका एक एक सैंपल वहां पर है फ्री में करने के लिए. So you can personally conduct those tests for yourself to understand what's your strength, weaknesses, where your passion lies. And अगर आप disc profiling करते हो, DISC is called disc profiling. This is again a psychometric testing. It's way of telling you that अगर आपका D आता है which is dominant self, अगर I आता है which is innovative self, ऐसे ही S और C का भी फुल फॉर्म है. सो वो आपको बताते हैं क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स आपके अच्छे हो सकते हैं, in which line of work you can really succeed. Whether it can be teaching, it can be HR, it can be marketing, sales, whatever, depending upon the set of questions that you answer. So you can try and do that. Again, they are free of cost. उतना अच्छा इवेल्युएशन नहीं आता फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिकॉज पीपल हु आर ट्रेन्ड इन इवेल्युएटिंग कैन गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव इट, बट स्टिल उसमें काफी कुछ क्लियर हो जाता है. एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सी कि आप जिस लाइन ऑफ करियर को चूज करना चाह रहे हो वो अभी आपको सही है या नहीं है आपके लिए. राइट. जनरली हम जब ये करते हैं करियर कोचिंग काउंसलिंग के टाइम पे, हम 11th-12th के स्टूडेंट के साथ बहुत करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं 12th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा वो, या 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने में उनको वो हो रही होती है. So that's when we do this profiling, and also during the career advancement. So now about coming to this question, what are your greatest strengths? You need to talk about the strengths that you are bringing for the job role that is there. Never say I'm hardworking. Hardworking तो पान वाला भी होता है, कपड़े धोने वाला भी होता है, धोबी भी होता है, सब होते हैं, right? They work more than us. सुबह 5 बजे से उठ के काम कर रहे होते हैं. We are not more hardworking than them. So what are we? We are smart workers. Smart workers matlab I know how to use technology so that I can save time and I can spend that time with people. I'm a smart worker because I know how to use processes. I can ensure that when I follow the processes, I'll save time and money for the company. And then I can utilize that money and time for the betterment of organization and for myself. So these are the strengths that you need to bring to, right? Thinking about each perspective. बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम वेरी सिंसियर. मतलब सिंसियर तो आप हो ही, बट आपका एक झूठ कि मैं आज ऑफिस लेट आया हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, ना, गाड़ी पंचर होती नहीं है. सो दैट आर यू सिंसियर 100%? नो, वी आर नेवर सिंसियर 100%. But I bring forth my sincerity to the role that I am playing in the organization can be a better strength to talk about.
right? Then I'm sincere for my job because I'm passionate about it. I love it. I really like doing this with people. I ensure that I know the numbers if I'm making a career in financial, if I'm making a career in digital marketing. I really love how the numbers work. I know about performance marketing, how performance marketing can really change the way the leads are generated for end companies, right? So different aspects of your own specialization, you are very clear. और वहाँ आपके जो पर्सनल स्ट्रेंथ है आप उनको कैसे फिट कर सकते हो. स्ट्रेंथ तो स्टिल पॉजिटिव होता है बात करने के लिए. हाउ नाउ द 10th क्वेश्चन, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस? और ये जानबूझ के पूछते हैं एचआर मैनेजर्स कंपनी के अंदर इंटरव्यू लेते वक्त. सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द आंसर फॉर दिस? व्हाई शुड आई बी नोइंग योर वीकनेसेस? क्या वीकनेसेस बताओगे अपनी? I get up late, I'm lazy. Is that what kind of thing that we can talk about? I'm lazy, I forget things very easily. है ना, ये सब नहीं बोल सकते हैं तो क्या बोलोगे ऐसा कंपनी के लिए जो आपकी वीकनेस को भी हाईलाइट बना दे? Ma'am, we can say sometimes I may become so workaholic that I don't get time for my personal stuff. वो भी अच्छी बात नहीं है ना. पर्सनल स्टफ के लिए टाइम निकालना मतलब सब पता चल जाता है कंपनी में क्या आप इंप्रेशन के लिए बोल रहे हो बातें. Yeah, weaknesses should be something like that, I am very dedicated. जो आपने अभी बोला उसी को चेंज करके बोल रहे हो. I am dedicated to the point where I sometimes forget timeline. What time I have to go home. Forget timelines does not mean कि मैं अपने काम की timeline भूल जाते हैं, but what time I have to go home, what time I have to have lunch. So it's kind of a positive thing you're talking about yourself, which is positive for the company, and you're also talking about negative about yourself. फिर काउंटर क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो हाउ विल यू वर्क, फिर यू विल गेट एब्सेंट. सो एंश्योर दैट एवरी वीकनेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वो जनरली आपसे पूछा ही ये क्वेश्चन इसलिए जा रहा है कि आपको ग्रिल किया जा सके आगे. This question is for that. So every weakness that you are going to put forth should be sounding good, positive about you. Sincerity, dedication, right? Sometimes I get aggressive towards achieving my goals. So sometimes aggressive hona is not bad because you're achieving your goals. Right? But then I am sure that my kindness brings me back to the core. And I'm good with people. My politeness comes and takes over me. वो आप तो अपना स्ट्रेंथ भी बता दिया, आपने अपना वीकनेस भी बता दिया एक साथ एक लाइन में. Right? So think over it. I am not able to tell you exact answers because I don't know about your weaknesses. If you can let me know about your weaknesses, I can turn it around and tell you how to answer that question. All right, moving forward, अभी एक दो slides और हैं, then हम series वाला portion कुछ कर ही नहीं पाए हैं आज, classes. Now these are few more questions that can be answered, that can be asked you in the interview. Can you elaborate on the day-to-day responsibility that your job entails? अगर आप पहले से किसी job में हो तब आपके लिए question आ सकता है. What are the characteristics of someone who would succeed in this role? What is the most important thing I could help with the first 90 days of employment? जब आपको अगर job में रख लेंगे तो आपके 90 days को शुरू में कैसे अच्छे से spend कर सकते हैं? What are some of the challenges you have seen in people in this role or in the team encounters? Sorry, this slide is for the questions that we generally ask in evaluation for appraisal. I forgot कि हमारा एक portion appraisal का भी था. So this is for those questions. This is the questions that we ask generally in appraisals with the people. Right? आपने एक साल कंपनी में बिता दिया, आपने जॉब कर ली, आपके KRA सब डिफाइंड है, then you can ask these questions for appraisal interviews. So can you elaborate on a day-to-day responsibility?
जो आप कर रहे हो, अगर आपके पोजीशन से आपको प्रमोशन मिल जाएगा या आप चेंज कर लोगे, तो हु इज द बेस्ट पर्सन इन द टीम राइट नाउ हु कैन सक्सीड यू इन दिस रोल? अब आपकी टीम में से आपको सोच समझ के नाम लेना होगा उस टाइम पर, बिकॉज यू नीड टू इंश्योर कि वो उसके अंदर वो सारी स्किल्स हों जो इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो रही है. इट कैन नॉट बी अ पर्सनल बायसनेस. And usually this question is asked to check whether you are biased or not for somebody in your team. Third is, what's the most important thing I could do to help with the first 90 days of employment? क्या क्या किया था आपने 90 days के employment में, और अब change करोगे आप जब role, तब आपको 90 days में क्या help company दे सकती है? What are some of the challenges you've seen people in this role or in the team encounters? Because now you have spent a year in the company, you know that people who have already taken this role and what kind of challenges they have faced, what kind of problems they faced, how did they come to the solutions, and what you as a person can change as a solution so that it is not sounding you're the similar person. Next, if I were in this job, how would your performance be measured? How will your performance be measured? Purely based on the KRAs that is there. Now KRAs को भी और specific measure करने के लिए हम एक और tool use करते हैं, which is called KPIs. KPIs is Key Performance Indicators. KRAs के अंदर एक एक ऐसी चीज होती है जहां पर हमारा इंडिकेशन आ जाता है कि यहाँ से आप मैक्सिमम काम कर रहे हो क्वांटिटेटिव वाइज, नॉट जस्ट क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन HR, you are in a talent acquisition role or any role where you are hiring people, so that can be a measurement tool. How many people in a specific number of time period you have hired? So suppose ये evaluation एक साल के लिए हो रहा है, so in last 1 year सब डेटा होता है कंपनी के पास कि इतनी पोजीशंस ओपन हुई थी, हाउ मेनी पोजीशन डिड यू फिल, राइट, हाउ मेनी पोजीशन डिड यू फिल ऑन टाइम, क्योंकि टाइमलीनेस होती है, हाउ मेनी पोजीशंस डिड यू फिल विद द मॉनेटरी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कि बजट इतना था, आपने ओवर अचीव किया बजट को या अंडर अचीव किया या ऑन कॉस्ट आपने बचाया कंपनी के लिए, राइट. सो दीज थिंग्स आर द मेट्रिक्स basically that decides how quantitatively useful your job is for the organization. जनरली पीपल यूज टू से अर्लियर कि सेल्स वाले ही सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजें लेकर आ सकते हैं कि क्या सेल करी, कितना रिवेन्यू, क्या टारगेट था, but it's not the case anymore. Every job role in the organization can be turned into a quantitative analysis through KPI methods. Right? Once you learn KPI KRA method, when we'll be doing appraisal properly, जब PMS पढ़ेंगे HR में, then we will be able to go through that topic details. Then आता है next question, what does the career path for someone in this role look like to you? So आपको क्या लगता है कि क्या आपको वो career path मिलेगा यहाँ पर? You need to ensure that your research is done on the organization. What are the functions or departments does this team work with most often? कि आपकी company या आपकी team जो है और कितने departments के साथ काम करती है closely, right? So now HR is a role where you're working with everybody all the time. So all departments basically you're working with. And everybody is dependent on HR for so many things, right from your onboarding to your exit. So many things that HR does, the entire organization is dependent on them. What are the functions? Last question. What does your job look like day to day, and how would you anticipate working with the person in this role? Now, this is about the manager or the person who is supervising you. They will ask you this question: how do you see yourself working with this person? राइट. सो यू नीड टू अगेन इंश्योर ये अपनी कंपनी के अंदर भी आपने अपने बॉस के ऊपर या जो आपके बॉस का बॉस है उस पर कितनी रिसर्च की हुई है. इफ यू आर गेटिंग अ प्रमोशन ही विल बिकम योर डायरेक्ट सुपरवाइजर. हाउ आर यू थिंकिंग ऑफ वर्किंग अंडर हिम और हर? सो उनके कुछ अच्छे पॉइंट्स कि उन्होंने अपने करियर की क्या अचीवमेंट्स करी, हाउ कैन दे हेल्प यू अचीव दैट थिंग मोर, उन्होंने क्या क्या अचीव करा है, कैसे अपनी टीम को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कैसे उनकी कंपनीज में अच्छा काम करते हैं, ऑल दोस थिंग्स वट एवर यू कैन नो अबाउट दैट. Then these are some non-verbal interview mistakes that we make. ये सब हम बात कर चुके हैं, but just to give you an overview. Not making eye contact with the interviewer, playing with your hair, touching face again and again, using too many hand gestures while we talk, not shaking hands firmly with the interviewer, fidgeting too much while answering the questions, having very little knowledge about the company. The research comes here, right? Giving a sense of nervousness by not maintaining smile on your face, right? So smile is important because you can't show your nervousness sometimes. But again, कई बार over smiling हो जाती है तो वो भी गड़बड़ है.
क्रॉसिंग आर्म्स ओवर चेस्ट व्हेन इट शुड बी बिलो योर. सो ये वाला हैंड जेस्चर जो है ना, हाथ बंद करने वाला, ऐसे बैठने वाला, दिस कैन नॉट बी देयर इन इंटरव्यू. बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम बात करें थे. आर्म्स हमेशा ओपन होना चाहिए एंड वेरी कंफर्टेबली समवेयर इन योर लैप, ऑन द चेयर, हैंडल ऑफ द चेयर, कहीं पर भी, but it should be very comfortably placed. Then presenting yourself with that posture. So आपके बैठने का तरीका, कितनी आवाज आप करते हो चेयर को हिलाने से लेकर, कैसे आप बैठे हो उसके अंदर, आपके पैर तो नहीं हिल रहे हैं नर्वसनेस में बहुत ज्यादा, हाथ तो नहीं हिल रहे हैं, बार बार टाइम तो नहीं देख रहे हो आप घड़ी के अंदर, ये सब चीजें हैं. Some mistakes that you can avoid to make. Now this thing that we have little bit touched upon, bad mouthing your previous employers, is a strict no. Never ever do that, right? It always create a very bad impression, no matter how much the new company tries to know about the past company. कई बार वो आपको बहुत क्रिप करेंगे, I mean आपको बहुत ज्यादा encourage करेंगे बोलने के लिए negative, but don't never say negative about any organization. राइट. इवन तो कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा क्लोज नेट होती हैं, तो उनको पता होता है उस दूसरे मैनेजर के बारे में, आपकी करंट कंपनी के मैनेजर के बारे में. टिल वो लोग फायदा उठाने की बात करेंगे, पूछेंगे उनके बारे में. डोंट से थिंग्स अबाउट कि नो आई हैव नो प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट. ऑलवेज डिनाई इट एंड गिव सम अदर रीजन which is far more better to understand by them. Second is inadequate research about a potential employer. Again, research पे बहुत सारी बात कर चुके हैं हम already. Unprepared with your answers is again a very strict no. But just ensure in case there is a question that is being asked and you have no clue इसका आंसर क्या होना चाहिए, just say no, that I don't know the answer. Very politely. So, excuse me, but I don't know the answer of this question. Maybe if you can pass this question and ask me more. Not paying attention. Obviously, you cannot ignore your interviewer. Talking too much. Checking your phone. Lacking humor, warmth, or personality. Bringing a drink with you again is a no. Arriving too late or too early, both the things are not appropriate, and dressing inappropriately. Right? So these are about the interview skills basically. About your LinkedIn and your resume now, how are we going to do that? I'll give you my email ID. You can note it down right now. It's the Gmail ID पे ही भेजना, I think वो better है. It's HR Human Rhythms. I'll write it in the chat so that you all can read it. Just ensure the spelling is correct, right? फिर वो बना पहुंचेगा नहीं. So you can just refer कि अपने CVs आप भेज देना. I will respond back to each one of you with the link that I was just talking about. Just try and change your CV with that link, जो भी उसके अंदर formats है, जो आपको better लगता है आपके लिए, and then send it back to me. I'll try and help you out in writing your objectives. जो या फिर हमारा जो title होता है under our name, that is very right, that you can change. And in case there would be any other errors or any other things that can be reviewed and changed, I will try and send it back to you individually. Right? So ये हो जाएगा आपका resume वाला portion. But just ensure कि आपका जो title हो, objective हो, जो भी आपका, should talk about your career prospect in the company. और हर कंपनी के अंदर आप चेंज करके भी भेज सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना है अपना. डिपेंडिंग अपॉन द रोल, बिकॉज कई बार होता है ऑर्गेनाइजेशन में जॉब शायद एचआर एग्जीक्यूटिव की ही है, बट रोल अलग अलग हो सकते हैं. एचआर एग्जीक्यूटिव कई बार सिर्फ टैलेंट एक्विजिशन के लिए हायर किए जाते हैं, कई बार एचआर एग्जीक्यूटिव सिर्फ टैलेंट मैनेजमेंट के लिए या एम्प्लॉय रिलेशंस के लिए हायर किए जाते हैं, कि आपका काम हायरिंग में नहीं रहेगा. यू जस्ट हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विद, गेट टू नो पीपल्स प्रॉब्लम in the company, solve their day-to-day problems related to different things. So depending upon क्या role लिखा हुआ है company का जिसके लिए आप apply कर रहे हो, you can change that objective a little bit around that. Okay? But एक standard tagline होना चाहिए, वो एक बार हम लिखकर देखेंगे objective में. Try and write it out. And in case you need my help, I'll try and change it for you. For the first time, I'll do that. Next time onwards, do a research and then do that on your own.
और चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। आप लोगों ने एआई यूज किया है कभी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो? तो यू कैन यूज चैट जीपीटी, इट्स एन ओपन एआई। ओपन एआई मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है, इट्स एन ओपन एआई, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज फ्री एंड ऑलवेज ओपन। सो बहुत क्रिस्प आंसर्स नहीं देता है, कुछ जगहों पे गलत भी हो जाता है, पर एटलीस्ट ये ऑब्जेक्टिव की अलग अलग टैगलाइंस हेल्प कर सकता है वो आपका करने में बहुत इजीली। Right? So type your own objective to it and then ask the question कि how can you write it in a professional English और professional language, तो वो उसका proper tagline बना के आपको भेज देगा immediately। ये immediately होता है। उसका chat GPT का लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ so that you will be able to I'll just type it in the you have to just create your email ID, I mean ID in this. This is ChatGPT OpenAI. .com. You go to it, you just have to create, जैसे आप अपना email ID बनाते हो तो पहली बार आपको अपने बारे में डालना होता है, your email ID has to be connected, just connect it and then it will open. And then any question you ask, it will be able to answer. But don't depend on it to write your objective, just write something so that it can change. Because उसमें आपका पर्सनल टच आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो इनके ऊपर फीड हो रखी है, वहां से कुछ निकाल के दे देगा, बट वो इट विल नॉट बी सुटेबल टू यू, योर पर्सनैलिटी। So just ensure that is there. For LinkedIn also, what you can do is just send me your LinkedIn links on the email and I'll go through them. And as and when I get a chance, I'll try and tell you about that. But LinkedIn ke bahut quickly, I'll just tell you the tips, what needs to be there. Of one, the photograph has to be there. You cannot leave your photograph wala option to an anda jo wahan bana hota hai. That looks very bad. LinkedIn is one platform because you're looking for networking, you're looking to meet the right people for getting you better career prospects, jobs, and other things. Very importantly, the photograph should be there. Jitna close up hoga, utna zyada better. Formal, maybe a little casual also can do, but not really very casual kind of a photograph with a good smart uh, close up. Or close up in the sense half the body can be visible out there so that people can easily see what you look like, right? How you are as a person. Then there are few things, वहाँ पर भी यही same चीज़ है. One is the tagline that you need to put for yourself. So what describes Yanchika as a person or Yanchika as a professional? Personal से ज़्यादा professional में आपको क्या describe करता है? So though you are trying to make a career, say maybe in HR or digital marketing, whatever specialization you are going to take, just write related to that I am looking forward to creating a career in HRM or more prospects in HRM, better prospects in HRM. Yeah, if what you want to become tomorrow, 3-4 years down the line, just write things about that. So describe, see, because HR perspective भी differ करता है how you different from the other person. So again, हो सकता है आपका रिज्यूमे वाला ऑब्जेक्टिव जो है पर्सनल वाला वो वहां भी आ सकता हो, राइट? सो यू कैन थिंक ऑफ इट। टैगलाइन के बाद आता है समरी, वेयर यू कैन राइट अबाउट यू, व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑल दैट। सो वेरी स्मार्टली, it's like a cover letter that you send to the job, that you can describe about yourself. Qualifications, from where you've done, what you're doing. So if you're doing, say, BCom honors, and then you're pursuing this course from YSI, tag YSI, talk about it, the course, right? And then a little description about what your good things, strengths about you, your skill set and strengths. Very crisp. Chota sa paragraph, though it allows up to go up to 5,000 words, I guess.
बट जस्ट सी कि कितना आप लिखना चाहते हो शुरू में, बिकॉज इट्स योर स्टार्ट ऑफ द करियर, तो बहुत ओवरबोर्ड नहीं होना. But whatever strengths you can write about, why not to write about? If you're good in sports, write about that. If you're good in cultural community programs that you have done in colleges, write about that. Any achievement that you have, just write about that. Then similarly, there are a few portions out there about separately about your qualifications. क्या आप कर रहे हो वो आप fill कर लेना आराम से, मतलब what you're doing currently. Then about certifications and diplomas, again, there is a separate thing. Then you can mention YSI ka course or any other diplomas you have done, any short certification that you have obtained, just write about that as well. उसमें छोटा छोटा सा है कि क्या, जैसे हम फेसबुक पे डालते हैं ना कि क्या क्या हम कर सकते हैं, तो सिमिलर थिंग कैन यू कैन पुट इन लिंक्डइन एज वेल. फिर लास्ट में आता है रेफरेंसेस. So now, how do you ask for references from people that you know? Right? So you can write. So for example, right now, how many teachers are there on LinkedIn from your current college? Try and connect with them and ask them for reference how you are as a student. That it will help me for my career if you write few lines about me as a reference. So you can ask for reference from people you already know. Recommendations कहते हैं उसको. So these recommendations work for freshers in a very smart way. How it is written, because you are a fresher, दो ही चीजें होंगी आपके पास. वन इज योर डिग्री और योर क्वालिफिकेशन दैट यू आर ऑब्टेनिंग. उनके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ आप रहते हो वो आपके बारे में प्रोफेशनली क्या सोचते हैं. नथिंग पर्सनल यू कैन राइट अबाउट each other, but professionally. Or even if you're writing a personal quality about each other, write it in a manner that how with this particular quality about, say, you know, Prerna said she's kind. So her kindness, how she can bring that kindness in the organization for better. So एक तो प्रेरणा का पर्सपेक्टिव है कि उसकी काइंडनेस कैसे हो सकती है. एक अब आपका यंशिका या दीप्ति जो भी आप क्लासमेट्स हैं उनके कुछ भी उसके बारे में आप लिख सकते हैं. और अगर आप लोग सारी जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो यू आर अ ग्रुप मेट हियर इन YSI, सो यू कैन राइट अबाउट ईच अदर. पहली रिकमेंडेशन एक दूसरे के बारे में दे दो. यू कैन आस्क नीरज सर फॉर रिकमेंडेशन, यू कैन आस्क मी फॉर अ रिकमेंडेशन. राइट, टीचर्स हु आर टीचिंग यू कि क्या उन्होंने आपके बारे में बोला. I will not write right now. I'll write after the certification is over, but I'll surely write. So this is because we'll get to know each other. I don't know much about you right now, but over a period of time when we'll study with each other, we'll get to know. You will understand me more. I'll understand details about you. तो वो रेफरेंस जो होगा वो जेन्युइन आएगा. अभी जो लिखा जाएगा वो बहुत कॉपी पेस्टेड टाइप वाला होगा, नॉट रियली फ्रॉम द हार्ट थॉट, प्रॉपर्ली थॉट थ्रू. सो आज फॉर दोज रेफरेंस, एटलीस्ट 2-3 रेफरेंस होने ही चाहिए आपके इसके अंदर. So it can be your college teachers, people, because you have spent 3 years with them, or any faculty, any classmates of yours, any senior of yours who is there. और कोई आपने अगर सर्टिफिकेशन किया है तो कर सकते हैं. And now start looking for internships in companies, because this is the right time. बहुत सारी organizations के अंदर internships खुल जाती हैं इस टाइम पे. और यू वांट टू वेट फॉर 3 months तब करना, अभी मत करो, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा. बिकॉज अगर मिल गई अभी एकदम से तो यू विल नॉट हैव अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. आफ्टर 3 months इनटू द कोर्स, आस्क फॉर इंटर्नशिप्स फ्रॉम वेरियस पीपल. राइट, तब आपका जॉब टाइटल ऊपर जो आपका टैगलाइन है वो बदल सकता है, दैट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स इन दिस स्पेशलाइजेशन, जो भी आप स्पेशलाइजेशन ISI में कर रहे हो. सो इंटर्नशिप विल ओपन अप अ एरिया वेयर यू कैन लर्न. साथ साथ आपकी क्लासेस चल रही होंगी, प्लस यू कैन प्रैक्टिकली सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. Right, few internships we open up every year also. We generally do it in the month of October, November. We matlab मेरी company में we open up, so we train few people. So I have selected few people from YSI in the past as well, and with some it has been a good experience. But मैं थोड़ी सी hard taskmaster हूँ in terms of that if you are committing a time to me, you need to work on those timelines. You cannot say कि excuse है वो excuse है. So that can also happen. बट हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द कोर्स भी देंगे YSI के अंदर भी. लाइक यू नो देर इज अ जॉब विच इज लाइव, जो कंपनी में खुली हुई है किसी भी जहां पर हम काम कर रहे हैं. वी विल गिव यू दैट जॉब टू पोस्ट ऑन योर लिंक्डइन एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर द राइट पीपल. राइट, और विद एनी अदर रेफरेंस पॉइंट. उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि प्रैक्टिकली इस पोजीशन को क्लोज कैसे किया जाए.
right? So that will give you a better chance to learn side by side. Similarly, formats बनाने के लिए, data drafting करने के लिए, ये सब चीजें जो basic चीजें हैं, we already might be having a demo and format with us, but we will ask you to do that just from the perspective that how Yanchika sees this particular format to be created. What is Prerna's perspective, right? कितनी research आप कर सकते हो और कितना वो कर सकते हो, that's how it will. So fill your LinkedIn with all the tips that I've given and then send your LinkedIn link. In case something would be amiss or needs to be changed, I will let you know about that as well. All right, again, आज की क्लास भी लंबी हो गई है. I'm so sorry, the topics are like that. कि इतना थोड़ा सा अगर कम कराएंगे तो then the knowledge will not be transferred properly. So I want at least जो भी basic जा रहा है should be transferred properly. All right, thank you so much for this. Any questions you have, you have my email ID. Just feel free to ask anytime. Thank you so much, Thank- ma'am. I can give you the Thank you, number ma'am. as well. I don't mind giving WhatsApp number. You can also WhatsApp me in case you face any problem. This is the WhatsApp. Just WhatsApp and I'll be able to answer. But try and send things on what email. All right. Thank you so much for the time, and it was great interacting with you. Looking forward to the people who are continuing with HRM, and all the best to others. May you get the best that you are looking for. Thank you. Thank Good you so night. much, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am.